Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to today's one-shot session where we are going to revise the current affairs for the June 2025. Okay, so here we are going to have the revision for the general awareness section. We are going to revise the ESI current affairs as well as we are going to revise the finance current affairs that are important and relevant from the exam point of view from June 2025. Okay, so this is going to be a very important session for all of you. If you are preparing for any of the examination like the RBI grade B, RBI grade A or NABARD grade A or such examination. Okay, so this is your one source solution where you can see that how much you have prepared and you can see that if you are able to give the right answers of the questions or not. Okay, so this is your current affairs revision session for June 2025 and this is directly linked or directly catering to your current TAP document also. So if you have the course and you are reading the current TAP document for June 2025, so through this session you can revise and you can see that how much you have already prepared and how much you are able to remember from the document. Okay, and for all the other students who do not have the course, they will be able to know that what are the important current affairs from June 2025. So let's get started. No, this is going to be current affairs. After the current affairs, after the current TAP, then there will be schemes and reports and such. Okay, so let's get started from today's session, but before that there is a never before offer that has been extended till 6th of August 2025 on the request of many of the students. So this is valid till today only. So this never before offer is only valid to today. So if you are thinking of buying the EduTap's regulatory body courses and you are thinking of buying a course that is systematic, that is crisp, so you can avail the offer. That is the never before offer. That is the best offer that is being provided to you till now. And here you are getting flat 74% off by using the code one time 74. So you can get flat 74% off for the RBI grade B courses, for the IFSC grade A, SEBI grade A, IRDI grade A, NABARD grade A, PFRD grade A courses. You can get flat 74% off, as well as for the combo courses also you can get flat 74% off. This is the never before offer. So if you are thinking of buying the courses, this is the best time to buy the course. Okay, so this is flat 74% off. Use the code one time 74 and this is available only till 6th August 2025. That is by the end of the day today. So now let's get started with the first question. So we are first starting with the finance current affairs. After doing the questions of the finance current affairs for the June 2025, then we will do the questions. Gurkira sir will come for the ESI current affairs with the MCQs of ESI current affairs, and after that Devanshu sir will come for the general awareness section for your June 2025. Okay, so let's get started with the first question and try to answer this question. So let's see how many of you are aware about this. Good evening everyone, good evening and welcome to the session. Okay, so I'm getting the answer C and that is absolutely correct. So basically the Union Minister for Finance chaired the annual review meeting with MDs and CEOs of the public sector banks, and the public sector banks have posted a net profit of 1.78 lakh crore in financial year 2024-25 and the net non-performing assets have fallen down to multi-year low of 0.52%. So here the answer is C. So the meeting has happened and it was noted during the meeting that from financial year 2022-23 to financial year 2024-25, the total business of public sector banks have increased from 203 lakh crores to 251 lakh crores, and the public sector banks have made the profit of 1.78 lakh crore in the financial year 2024-25. Okay, so this is the recorded net profit that has been made by the public sector banks, and the net non-performing asset for the public sector banks have gone down to a multi-year low of 0.52%. So these data are very important, as well as the capital to risk weighted asset ratio, that is the capital adequacy ratio, how much adequate capital the banks are maintaining, the public sector banks are maintaining. So that is at 16.15%. So that is also very good. Okay, now coming to the next question. Now this question is in regards to that which of the following is a technology based initiative to make frictionless credit, easy credit or like easily available credit to every Indian and further the government's broader vision of digital empowerment, financial inclusion and last mile service delivery. So basically for frictionless credit, for the easy availability of the credit without any friction, without any problem. So this kind of technology has been developed, this kind of system has been developed. Now what is this?
Now this term has been in news for quite some time, and this is quite being discussed. It is being like compared with the UPI, like the UPI ecosystem, the unified payment interface has revolutionized the payment transactions, the digital transactions. Similarly, it is said that this system is going to revolutionize the lending system for the underserved areas, and this is ULI. So ULI is the unified lending interface that is being developed as a technology based initiative to make frictionless credit available to the underserved areas. Okay, so this is the basic idea. So basically here you can see again, this is also from PIB, and the PIB news articles, the PIB topics are always very important. So ULI is envisioned as a digital public infrastructure in the lending space designed to integrate technology, data and policy into one seamless platform, and this platform is going to help to provide frictionless credit to the underserved areas. Okay, and this is being developed by RBI Innovation Hub, that is RBIH. So this is important. Okay, so let's have the have the basic understanding of the ULI ecosystem. Now coming to the next question, that is in regards to, according to SEBI's operational framework for the issuance of ESG debt securities, that is environment, social, governance, debt securities, through which the companies can raise the money. Okay, so this is the ESG debt securities. This is the financial instrument through which the companies are raising the money. They are raising the money from the investors, and the investors are giving the money to the companies so that the companies can invest in the projects that are helping the environment or that are working for the social betterment or for the better governance. Okay, so basically the companies are raising the money through the financial instrument, through this debt security, that is the ESG debt securities, and the companies, after raising the money, they are investing in these areas. So here it has been said that there is an operational framework that has been launched by the SEBI for the ESG debt securities effective from June 2025. Which of the following statement correctly describe key features of ESG debt securities? First of all, the framework applies to public as well as the private issue. The private issue of the ESG debt security. So not only for the public issue but for the private issue of ESG debt security also this framework is applicable. Sustainability bond issuers must follow green debt security norms. So if the debt security, that is the sustainability bond, is being issued, that must follow the green debt security norms. That means the debt that is raised, the money that is raised from the investors should be invested in the green projects, in the sustainable projects. Okay. Independent third-party reviewers or certifiers must verify alignment with recognized ESG standards. That means if the money has been raised for the ESG areas, so the money should be invested in the ESG areas also, or in the particular area that is promised. So independent third-party reviewers and certifiers should verify that there is alignment with recognized ESG strategy. So this is also correct. So basically first statement is wrong, second and third are correct, and you have to tell the correct statement. So here the B is the right answer. Okay. Yes, most of you have given the right answer, so that is good to see. So basically SEBI introduced a structure framework for the social bonds that are released for the collection of money so that the betterment can happen and the companies can raise the money so that this money can be invested in such projects that are furthering the social betterment. Okay, sustainability bonds and such. So now the framework applies to both public issues and private placements of the ESG debt securities. Independent third-party reviewers or certifiers must verify the alignment of the money that has been raised with the ESG standards. Okay, and the sustainability bond issuers must follow the green debt security norms. The rest of the norms that you can read, but these are some of the important points from this news article. Next, coming to the next question, that is in regards to the @valid handles that was quite in news recently, and we have discussed this in the Finance 360-degree session also. So read the statements carefully and try to answer this question. Okay, let's see how many of you are able to answer the question. Okay, so here, see, SEBI announced a significant initiative to enhance investor protection and combat unauthorized money collection in the securities market. So there were fraudsters that were taking the name of the registered intermediaries and they were collecting the money from the investors in the securities market. Okay, so the fraudster were using the name of the authentic
companies to raise the money from the investors, and they were running away with the money then. Okay, so SEBI has said that SEBI is going to introduce a structured and validated UPI address mechanism featuring the exclusive @valid handle for all SEBI registered investor facing intermediaries, so that if the SEBI intermediaries are raising the money, they can raise the money through a valid handle, so that the investors, they can recognize that okay, these are the valid entities and these are the not so valid entities, these are the fraudsters. So there is the @valid handle that has been introduced. Okay, so which of the following statement is correct in this regards? So it should be incorrect, sorry. Which of the following statement is incorrect in this regards? So both validated UPI address and SEBI check shall be available to users with effect from October 1, 2025. So that is correct. Username will be provided that will be a readable name chosen by the intermediary, followed by a mandatory suffix that clearly identifies that category. So basically, let's say there is a ABC broker. So they can choose the prefix that is ABC dot for broker, let's say BRK is the suffix. Okay, so basically username will be provided with the readable name chosen by the intermediary, and there will be a suffix that will identify that okay, BRK means broker in the securities market. These validated handles will be exclusively allocated by the NPCI only. So the validated handles will only be provided by the NPCI, because the UPI ecosystem works under the NPCI only for the payment collection by registered SEBI intermediaries. Intermediaries are also required to generate a QR code that prominently features a thumbs up inside a green triangle. So this is also correct. SEBI check verifies the authenticity of the UPI IDs. So all the other statements are correct. Only the third statement, that is the C statement, is incorrect. How is the D1 incorrect? Is it clear? Is it clear, everyone? So the C statement is incorrect here. It is not self-certified syndicate bank, because if the handles has to be provided, it is the NPCI that can provide the handles. Okay, so the C statement is incorrect. So here you can see that effective from 1st October 2025, the UPI handles and the SEBI check will be provided, or it will be started, as well as the valid valid handles. They will be exclusively allocated by the NPCI only for payment collection by SEBI registered intermediaries, and visual verification can happen through this thumbs up that is inside the triangle. For the visual verification, this is there. SEBI check as well as the name, you can understand that the username will have the initial part that will be decided by the entity. So let's say entity has decided ABC dot BRK, because the entity is a broker, so BRK is the suffix that will be added. Okay, so if the entity is a broker, so BRK is the suffix that will be added. Okay, if the entity is a research analyst, RA is the username suffix that will be added. So there are different username suffix that will be added after the name that has been decided by the intermediary. Next is SEBI check that will help you verify the authenticity of the UPI IDs either by scanning the QR code or by entering the UPI ID randomly. So you will get to know that the UPI ID is valid and it is related to the registered intermediary or not. Okay. Next question is that Securities and Exchange Board of India has mandated that product advisory committee in commodity exchanges must convene at least dash with immediate effect as of June 2025. So basically PAC, that is Product Advisory Committee in the commodity exchanges, should have a meeting at least how many times? So it should happen, like the meeting should happen at least twice a year. So here the right answer is B, that is twice a year. So basically it has been said by SEBI that the PACs, that is Product Advisory Committees in commodity exchanges, must convene at least twice a year. So direct one line statement here you have to understand. Now next is e-KYC Setu system through which the digital KYC happens, through which the digital KYC can happen. So this e-KYC Setu system has been recently allowed by the SEBI for the registered intermediaries. The SEBI has allowed the e-KYC Setu system for the digital KYC. Now this system is like provided jointly or is developed jointly by who? So which of the following entities have jointly developed the e-KYC Setu system that is recently allowed by the SEBI for usage by the registered intermediaries to perform Aadhaar based digital KYC? Okay.
So which are the intermediaries, which are the entities that have jointly developed the KYC? e-KYC Setu system. Yes, it is NPCI, National Payments Corporation of India, and Unique Identification Authority of India, that is NPCI and UIDAI, that have jointly developed the e-KYC Setu system through which the digital KYC can happen smoothly and easily. Okay, so D is the right answer here, and here you can see that the SEBI has allowed its intermediaries to use the e-KYC Setu system to do the digital KYC. Okay, so this is the idea. Next question is from your VCF scheme, that is the scheme for the venture capital funds. So venture capital funds, they are the funds that invest in the startup companies, they invest in the small and medium sized companies, and the VCFs, it was said that now the VCFs that were registered under the previous regulations, they have to stop, and the AIF regulations were introduced. Okay, so it was said that the VCFs, they that have the schemes, or the VCFs that have collected the money from the investors to invest in the startups or the small and medium enterprises. So the VCFs, when their schemes finish, when their schemes are wound up, when their schemes have finished the timeline, so the VCFs have to like give up their certificate of registration under the previous regulations. Okay, and the new VCFs can only be established under the alternative investment fund regulations. Okay, so now the VCFs, for them a scheme has been launched by the SEBI. So basically the eligibility to be under the scheme is that the VCFs with at least one scheme whose tenure has expired but not wound up. That means let's say the scheme of the VCF was for 6 years. Now the tenure of the scheme has finished, but the VCF has still not returned the money to the investors. Okay, so in this case, if the VCF has at least one scheme whose tenure has finished but has not been wound up and has completed the migration, and the VCF has completed the migration from the previous regulations to the alternative investment fund regime, so these are the eligible VCFs that can come under the scheme. Next is the scheme shall commence on July 21, 2025 and end on January 19, 2026. It is not July, it is January. Okay, so second statement is wrong. The base amount for settlement for delay up to 1 year in winding up the scheme. So if the scheme has not been wound up within the timeline, and if 1 year has passed, if 1 year has been delayed for the wound up of the scheme, then the penalty will be around 1 lakh, and for every subsequent year of the delay that is happening or the part thereof, an additional amount of 50,000 shall be payable. So second statement is also correct. So first and third statement is also correct. So 1 and 3 is correct. You have to tell the correct statement. That's why C is the right answer here. Okay, so basically this is the idea. Now VCFs are the investment instruments through which the VCFs collect the money from the investors, and they invest the money in the startup companies, in the small and medium sized companies. Okay, now the VCFs, they were established under the regulations of 1996, but the regulations of 1996 were replaced by the AIF, that is Alternative Investment Fund regulations of 2012. Okay, so now it was said that the older VCFs that were registered under the older regulations, once their scheme is finished in tenure, once their their units are finished in tenure, so they have to close up and they have to give up their certificate of registration. But VCFs, even if their scheme finished in tenure but they were not wounding up, they were not returning the money of the investors, so the SEBI said that if you have not returned the money of the investors even after the tenure of your scheme has finished, still you have not returned the money to the investors, then under the scheme just give a penalty and you will be left. Okay, we will not take any strict action against you. So SEBI said that we will not take any strict action against you under the VCF settlement scheme if you just pay the penalty for delaying the wounding up of your scheme. Okay, so this is the basic idea. So we have discussed this in a complete session. where we have discussed about the VCF settlement scheme, the norms under the scheme, the amount that is resided under the scheme. So this is a complicated scheme. If you want to know more about it, you can see the complete session. But this is the basic idea that the VCFs have to close down. But even after their schemes tenure was finished, but still they were not closing down. So the SEBI said that you are not returning the money to the investors. So we are going to put a penalty on you, and we will not take strict actions if you just accept the penalty and you come under this scheme. Now coming to the next question, that is
under existing regulations, startup promoters are not eligible to retain or hold shares based benefits, including the ESOPs. Okay, so basically it is said that the startup promoters, if they want to have the initial public offering, that means if they want to offer their shares, if they want to offer the shares of their company to the public, so that is initial public offer, that is a company for the first time is offering its shares to the public. Okay, the company for the first time is offering its shares to the public, so this is the initial public offer. So basically it is said that if the startup promoters, if the startup owners, they want to do the IPO, they have to release or they have to liquidate all the share based benefit that they have got. But now it has been said that the startup promoters, they can keep the ESOPs or they can keep the share based benefit if the share based benefit they have got at least 1 year before filing their draft red herring prospectus for an initial public offer. So this is the basic idea. Yes, the answer here is 1 year. Again, I have taken a session on this also. So basically it was said that the ESOPs, so basically it was said that the startup founders, they were previously not allowed to have any share based benefit, and if they had the share based benefit, they had to liquidate it, they had to close it down. Okay, now it is said that if the startup founders, they have the share based benefit, they can continue with the share based benefit if the share based benefit they have received 1 year prior to the draft red herring prospectus that is provided for the IPO. Okay, so before the IPO is released, there is a draft red herring prospectus that is provided. That is a kind of prospectus that is released that, okay, we are releasing this kind of IPO, we are going to raise the money, where we are going to invest the money, what is the financial condition of our companies, all of that is mentioned under the DRHP. So when a company is releasing the DRHP for the IPO, before, like 1 year before this release of the DRHP, till then, whatever share based benefit the startup founders have, they can keep it even after the IPO. This is the basic idea. Okay. Now next is about the delisting. So this also we have discussed, that it was said that the public sector undertakings, they can delist their shares from the market. Okay, that means the public sector undertakings, if they have more than 90%, if equal to or more than 90% of the shares the government has for the PSUs, they can delist from the market. Okay, so regarding this also we have discussed in the session. Now coming to the next question, that is in regards to your SEBI Real Estate Investment Trust Regulation 2014 that was updated. Okay, so try to answer this question. So the SEBI board has approved amendment to the SEBI Real Estate Investment Trust Regulation 2014 and SEBI Infrastructure Investment Trust Regulations 2014. So which of the following amendments is correct, or are correct, that you have to tell me. Okay, incorrect, sorry, which of the following statements is or are incorrect, that you have to tell me. So try to answer this question. Okay, I am getting the answer C. Try to answer the question 9. What is the right answer for question 9? Okay, so basically the sponsor, investment manager or manager and project manager, they shall not be considered as public unless these are qualified institutional buyers. Okay, so basically it is said that the sponsor, investment manager, project manager, they will not be considered public unless they are the qualified institutional buyers. So that means if they are the qualified institutional buyers, they can be considered public. Okay, so this is the wrong statement, because it is said that the related parties of the sponsor, investment manager or project manager, they shall not be considered public unless these are QIBs. But for the sponsor, see, the related parties of the sponsor, investment manager, project manager, they will not be considered public unless they are the qualified institutional buyers. But in the case of sponsor themselves, investment manager themselves, the project manager themselves, they will never be considered public even if they are the qualified institutional buyers. Okay, so the first statement is wrong. The negative net distributable cash flows generated by a holdco
on its own can be adjusted against the cash received from the special purpose vehicle. So basically, the real estate investment trust or the InvITs, they can have a holdco that is holding the special purpose vehicles through which the investment is being made in the real estate or in the infrastructure. Okay, so basically the shortfalls, losses or expenses that the holdco is making, that can be covered through the profit generated through the SPV. So this is correct. Minimum allotment lot in primary market for privately placed InvITs has been reduced to 25 lakhs. So this is also correct. So basically second and third are correct, first is wrong, and that's why D is the right answer here, because you had to tell that which of the following statement is or are incorrect. So here the D is the right answer. Yes, very good everyone. So first statement is actually incorrect, and that's why the right answer is D only. Now here you can see that the related parties of the REIT or InvIT and the sponsors. So the related parties, they can be considered public if they are the qualified institution buyers. If they are not the qualified institution buyers, they will not be considered public. This is the idea. Okay. Now holdco can adjust its losses from the returns that it is getting from the SPV. Minimum allotment lot for privately placed InvITs in the primary market reduced to rupees 25 lakhs. I have taken a complete session on the InvITs and REITs. Okay, that what is the changes that has been brought, and we had discussed that previously minimum allotment lot in the primary market for privately placed InvIT was rupees 1 crore. That was decreased to 25 lakhs. Okay, so this is the idea, so that the privately placed InvITs in the primary market and secondary market, they have the same valuation or they have the same lot size. So lot size was decreased in the primary market to 25 lakhs like in the secondary market. So this is the basic idea. Now coming to the next question. So again we have discussed this in a session. So if you want to know more about the changes that has happened in the REITs and InvITs, so you can see the complete session. Otherwise these are the three main points that you need to remember from the topic. Okay, coming to the next question, that is, on a review it has been decided that financial year 2025-26 onwards, the additional component with 35% of the PSL shall be reduced to what percentage, thereby making the overall PSL target as 60% of A and BC or COBE for the small finance banks. Okay, so this is the idea. Related parties, here the related parties is not written. Okay, so related parties, they can be considered qualified institution buyers, but the sponsor, investment manager, they will not be considered the qualified institutional buyers. Like here also you can see that the related parties of the REIT, InvIT and such, they will not be considered as public if they are not qualified institutional buyers. The sponsor group, investment manager, project manager shall always be excluded from public even if they are the qualified institutional buyers. Okay, I hope it is clear now. Okay, coming to the next question. Basically for the small finance banks, it was said that they have to provide 75% of their adjusted net bank credit. So from their credit they have to provide 75% to the priority sector lending, out of which 35%, out of which 40% has to be provided to the subsectors and 35% can be provided to any of the sector in the priority sector lending criteria. Okay, now it has been said that the 35% limit has been decreased to 20%. Okay, so now in total 40% plus 20%. So for the small finance bank, they have to provide 60% of adjusted net bank credit to the priority sectors. Okay, so this is the basic idea, that the priority sector lending, under this there are sectors like agriculture, micro, small and medium enterprises, export, education and such. So the small finance bank, out of 75%, they had to provide 40% to these particular sectors, and the limit like the percentages were determined. Now it has, and the rest of the 35% can be provided to any of the sector. No limitation in this. Now this has been decreased to 20%. So basically, on a review, it has been decided that the financial year 2025-26 onwards, the additional component with 35% of the priority sector lending will be reduced, shall be reduced to 20%. Okay, so this is the idea. So here you can see the guidelines. So previously,
the small finance bank had to extend 75% of the ANBC to the priority sector lending, out of which 40% of the ANBC should be allocated to different subsectors as per the limitations, as per the percentages decided under the priority sector lending, while 35% can be provided to any one or more sectors as per the decision of the small finance bank itself. Now this 35% of the limit has been decreased to 20%, and so 40% the small finance bank has to provide to the subsectors as decided under the priority sector lending. 40% has to be divided among the sectors as decided by the PSL norms, while 20% the priority sector lending can be done to the specific segments or to the specific sectors as decided by the small finance bank themselves. So in total 60% has to be provided in the priority sector lending, okay, by the small finance bank. So this is the overall idea. Coming to the next question, that which of the following statements is not correct as per the RBI's latest KYC updation guidelines for the regulated entities. So individual low risk customers can continue uninterrupted transactions if KYC is updated by June 30th, 2026 or within 1 year of the due date, whichever is later. Okay, this is correct. Banks are required to send 3 advance notices for the KYC updation, all of which must be delivered through physical letters. No, only one has to be delivered through the physical letter. Okay, the RE shall expeditiously implement the update but not later than January 1, 2026. So the second and third both statements are incorrect, and that's why B is the right answer here. Okay, so the B is the right answer here because second and third both are incorrect. So basically the norms have to be followed from January 1, 2026, from January 1, 2026, not June, it is January. Okay, and the low risk individuals, for them the KYC can happen within 1 year of its falling due or by June 30th, 2026. Okay, so this is the basic idea, as well as the 3 intimations have to be sent for the KYC update, and one of which has to happen in the physical manner. Next is, which institution has been assigned the responsibility of building the prototype for the digital public infrastructure for payments in consultation with select banks? So which of the following? So if you are not aware about this answer, try to use your senses and try to use your logic and try to answer this. That which institution has been assigned by the RBI the responsibility of building the prototype for the DPIP in consultation with select banks? So here it is the RBIH, that is the Reserve Bank Innovation Hub. Usually RBIH is involved in these kind of activities. Okay, so the answer is RBIH. So the Reserve Bank of India, in collaboration with major public and private sector banks, in launching the digital public infrastructure for payments to combat the surge in digital payment frauds. So this is being developed. So RBIH, that is Reserve Bank Innovation Hub, has been tasked with building a prototype in consultation with the 5 to 10 banks. This is the idea. Now the initiative follows the recommendation from a committee chaired by AP Hota. Okay. Now next is that which of the following entities has recently received in principle approval from the Reserve Bank of India to operate a cross-border payment aggregator under the Payment and Settlement System Act 2007 that will help in the cross-border payments. So which of the entities have got this kind of license or in this kind of in principle approval? So it is PayPal Payments and Worldline e-Payment India. Okay, so around 13 questions are done and you have only 5 questions left with me. Okay, okay, so here, yes, B is the right answer. Correct, absolutely correct. So here PayPal Payments and Worldline Payments e-Payments India, this is the one that has got the in principle approval. Okay. Next is that Reserve Bank of India issued final guidelines to tighten onboarding and monitoring norm for Aadhaar enabled payment system touchpoint operators. Okay, so basically for the AePS touchpoint operators, there are the norms that the RBI has released. Okay, so which of the following is correct answer for this? Now we are on the 14th question, so there are 4 questions more that is left. Okay, then Gurkira sir will come for his component. Okay. So the Reserve Bank of India issued final guidelines to tighten onboarding and monitoring norms under the AePS touchpoint operators. So basically AePS is an Aadhaar enabled payment system through which if you do not have the UPI, if you do not have the cash, and if you do not have the
debit card or credit card and you are going to a shop, you can just provide your Aadhaar details and you can provide your thumbprint and your your thumbprint or your eye scan you can provide, and through that the transaction can happen by you to the merchant. Okay, so this is the Aadhaar enabled payment system. Now the touch point operators are the merchants that are able to do this kind of transaction, or the the business correspondents or the agents of the bank that can provide you the money if you provide them the Aadhaar details as well as your biometric details. Okay, so this is the idea. Now what was happening, that there were frauds that were happening, your biometric details were being stolen and such. So it was said that the Aadhaar enabled payment system touch point operators, for them there should be stronger norms that has to be followed. And it is said that if the Aadhaar enabled payment system touch point operator has not performed any financial or non-financial transaction for a customer for a continuous period of 3 months, then there should be a re-KYC that should happen. Okay, so here the 3 is the answer. So this is the idea. We have discussed about the Aadhaar enabled payment system through the Aadhaar. Like if you are providing your Aadhaar details, if you are providing your biometric through this kind of systems, the transaction can happen. You can pay to the merchant or you can take out the cash if you are going to the agent of the bank and such. Okay. Now for the Aadhaar enabled payment system touch point operator that have these kind of machines, the merchants or the business correspondents that have these kind of machines, they can provide you with the money or they can complete the transaction. Now it is said that Aadhaar enabled touch point operators, if they are inactive for 3 months, for a continuous period of 3 months, so there should be a KYC that should happen for them. Okay, so this is the basic idea, that this acquiring bank shall carry out KYC of ATO before enabling him or her to redo the payments or to continue with the transactions and such. Next question is in front of you, that is regarding the Payment Regulatory Board Regulation 2025. So this was quite in news. So basically this is a very hot topic. This is a very important topic that you must know about. So here which of the following statement is incorrect, that you have to answer. Okay, so a member of the board nominated by central government, unless he is a public servant as defined in Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, shall hold office for a period of 4 years and shall not be eligible for re-nomination. That is absolutely correct. A member nominated by central government shall cease to hold office if he is absent himself without the leave of the chairperson from 4 consecutive meetings of the board. So the 4 is not correct here. How many meetings? So the member nominated by the central government in the Payment Regulatory Board shall cease to hold office if he is absent himself without the leave of the chairperson for 3 consecutive meetings of the board. Okay. Next is the board shall ordinarily meet at least twice in a year at such place or through such means as decided by the chairperson of the board. Every member has 1 vote, but the chairperson, in case of the absence of the chairperson, the deputy chairperson has a casting or second vote. Okay. The quorum of holding a meeting or the members that should be present in the meeting should be at least 3 members. So this is the idea. Now here the B statement was wrong because it should be 3 rather than 4. Okay. So this is a very important board that you have to know about, and all the important points are marked here, that the board shall meet at least twice in a year, 3 members should be present during the meeting at least, and the equality of votes. So basically all the members have 1 vote. In the case of equality of vote, the chairperson, or in the absence of the chairperson, the deputy chairperson will have a second or casting vote. Okay. 3 consecutive meetings. If the member nominated by the central government is absent in 3 consecutive meetings, then they should cease to hold the office. This is the basic idea. Now coming to the next question, that which Indian e-commerce company has become the first to receive an NBFC license from Reserve Bank of India. Okay, so such kind of direct question can come in your phase 1 of the examination. So if we are talking about the first, so this is important. Okay, so here the answer is Flipkart. So basically the Flipkart secures NBFC license from RBI and becomes the first e-commerce platform to receive the NBFC license from the RBI. But the Flipkart only has the lending license. That means they cannot take the deposits. Okay, they are basically doing the lending only. So lending only NBFC license, cannot accept the public deposits. The next question is that which of the following statements about gold as a gold reserve asset in 2025 is or are true? So basically the gold has surpassed the euro to become the 2nd largest global reserve asset. So this is absolutely correct. The 1st largest global reserve asset is what?
that you have to tell me. US dollar is 46%. It is not 36, it is 46% in the global reserve composition. So this is wrong because it is not 36, it is 46. So gold has surpassed the euro to become the second largest. So basically dollar is the first largest reserve asset, then there is gold, then there is euro now. Okay. A World Gold Council survey found that 95% of the central banks plan to increase gold reserves in the next 12 months. So this is the idea. So here first and third statements are absolutely correct, but you had to find the correct statement. So first and 3 is the right answer. So B is the right answer. Very good, everyone. So here basic information that US dollar global reserve composition, US dollar 46%, gold 20%, euro 16%, and the euro has been surpassed by the gold. Okay. Next and the last question from my end, a very direct question. And such kind of static question can also come because they are related to current affairs and they have been in news or they were present in the newspapers. Okay. So this question is that the Reserve Bank of India increased its gold reserves by 57.5 tons in financial year 2024-25. So which global benchmark is used to revalue the gold holdings on a daily basis? So it is London Bullion Market Association. So this kind of static question, you might think it is static, but it is very much related to the current affairs and it has been in news and in the newspapers. So the answer here is D. Okay. So basically the gold reserves have been increased by the Reserve Bank of India and the RBI revalues its gold daily based on the 90% of the LBMA gold price in the US dollars and the rupee dollar exchange rate. Okay. As well as see if it is seen that today the gold value has increased. So this unrealized gains or the instant gains that have happened because of the increase in the value of gold, this goes into the gold revaluation account. Or if the loss has happened, that means gold price has decreased and it is seen that today gold value has gone down. So the losses that have been made, that have been deducted from the gold revaluation account. So unrealized gains or losses from revaluation are recorded in the currency and gold revaluation account. This is the basic idea. Now we are moving forward with the ESI part, and for that I will invite Gurkira sir. Okay, so he will be taking over. So thank you, ma'am. So guys, now let's start with the ESI component here, and I hope your finance part is done. You got an understanding of the finance part. Now let's talk about the economic and social issues component here. But before I proceed further on, guys, ठीक है जी, थोड़ा सा मैं बता दूं कि guys, with regards to economic and social issues, one thing that you have to keep in your mind is there are many topics which are being consistently repeated. For example, if I talk about government e-marketplace, ONDC, these are topics that we have already covered. So these are topics that we have already covered. So what we are going to do here is कि जो topics हम already cover कर चुके हैं उनको हम repeat नहीं करेंगे, but हाँ जो टॉपिक्स में पढ़ा चुका मैं आपको ये बोलूंगा कि जो प्रीवियस सेशंस दैट वी हैव टेकन, प्लीज डू गो विद दैट आल्सो. ओके, चलो जी. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट with regards to an international organization which has its headquarters in India, that is Coalition for Disaster Resilient Initiative. So what has happened is that the 7th International Conference on Disaster Resilient Infrastructure has taken place, and it has taken place in France. That is something you need to remember, which is co-chaired by CDRI. What is CDRI? CDRI is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, which has its headquarters in India. Okay, so CDRI ने शेयर किया है. अब वहां पे बेसिकली क्या है, India has outlined its 5 global priorities so that it could strengthen the disaster resilience. In context of this, which of the following is not among the priorities mentioned by India here? This kind of question can be asked in the examination. We have seen in the previous papers also that this sort of things have been asked. Okay. Sure. So tell me what will be the answer. Good evening, Upasna. Good evening, Mukund. Good evening. I can say Bharat, Mayank. Okay, good evening, everyone. So let's begin with the question. What will be the answer here? So answer here starts with option number B, that is establishment of the global standards for disaster insurance is the answer here. Okay, that is establishment of global standards for disaster insurance here. Now, when I talk about this specific thing, guys, the important part here is that the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, they have introduced this conference, which is by the name of International Conference for Disaster Resilient Things. Okay, theme was shaping a resilient future for the coastal region here. And when I talk about the 5 priorities which India have highlighted,
अब आप डिजास्टर के रिगार्डिंग कौन सी प्रायोरिटीज इंडिया ने सबसे बोला, इंटीग्रेशन ऑफ द डिजास्टर रिजिलियंस इन एजुकेशन, integrate this with education, have a proper repository, creation of global digital repository, innovative financial mechanism, special focus should be given on small island and developing states here, and then there should be a thing which is strengthening of the early warning systems here. These are the important global priorities which India has outlined. Now, the important thing for us is what is about coalition for disaster resilient infrastructure, which is a very, very important thing. Why I am saying it's a very important organization? Because guys, if you talk about India, there are 4 organizations जिसका headquarter India में, ISA, CDRI, उसके बाद एग्रीमेंट साइन हुआ IBC का, और लास्ट एग्रीमेंट साइन हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का. These are the important international organizations which have its headquarter in India, and one of them is CDRI. So Coalition for Disaster Resilient Infrastructure started in the year 2019, and it is again an initiative that was proposed by the India. The reason for proposal was that India wants that there should be resilience of new and existing infrastructure systems so that the impacts of the disasters like natural disasters can be ensured for sustainable development. ठीक है जी, ये वाली चीज करो. ठीक है, चलो. Then comes the next important part. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. It is actually an intergovernmental organization which is bound by a treaty. But remember this thing, it does not have any legal binding. So that is an important point for you guys to understand, because if you see the latest end of the examination, they are going really in depth. अगर वो इन डेप्थ सवाल आपसे पूछेंगे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. और दूसरी याद रखना, इसका जो इनिशियल फंडिंग था ना, वो इंडिया ने ही किया है. The core cost for first 5 years have been given by the India also, और members जो है वो voluntary support जो है यहाँ पे provide कर सकते हैं. So this is something you need to remember here. And if I talk about headquarter of CDRI, that is in New Delhi. So ISA headquarter is in Gurugram. So we are doing with the ESI current affairs. Let's talk a very interesting current affairs that Divanshu sir might have discussed with you yesterday also. Tell me which country has recently became the member of International Solar Alliance, जिसको आप Solar Alliance भी बोलते हो. Can you tell me the answer for that? Which country has recently became the member of International Solar Alliance? बताइए जी. That is Moldova. कल ही बना मेंबर, इंपॉर्टेंट है, याद रखो यार, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट. Recent member is Moldova. Absolutely right guys. Moldova has become the recent member. ठीक है, so this is about your first news on CDRI. Next question is again on the disaster framework, that is about Sendai framework, which is again on disaster. Okay, so recently the 8th session of Global Platform for Disaster Risk Reduction was held in Geneva, and the conference basically talks about Sendai framework's goal for disaster resilience. So we have discussed about CDRI, India का infrastructure है. फिर दूसरा एक framework, global framework है, that is Sendai framework. Now Sendai framework basically sets some 7 global targets which have been set here. Which of the following is again not one of the 7 goals that have been set up under Sendai framework, the tenure for which is 2015 to 2030. So tell me what will be the answer for that. Substantially reduce the global disaster mortality, substantially reduce the number of people affected by disasters, substantially eliminate disaster related greenhouse gas emissions, substantially reduce economic losses in relation to GDP, and then it is important, substantially increase the availability and access to the early warning system and disaster risk reduction information. Tell me what will be the answer here. Second question, you are giving me the answer option number C. Let's look at the answer. Answer is absolutely right. Substantially eliminate disaster related greenhouse gases जो है इसका पैरामीटर नहीं है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं what are these 7 global targets which are important for us. This is being divided into 2 parts. We have to reduce something, that is substantially reduce and substantially increase. So what we have to reduce here is global disaster mortality. You can hear at this, you can see at this point of time also when an earthquake has taken place in Russia, तो disaster आया. जापान में कितना बड़ा सुनामी एक्सपेक्टेड था, but what has Japan done? Japan is so much advanced in that part कि उन्होंने पहले ही लोगों को बोल दिया कि आप वहां से कहीं ना कहीं वेकेट कर दीजिए, which means mortality will be reduced. So global disaster mortality has to be reduced. Number of affected people has to be reduced.
economic losses, damages to critical infrastructure should be reduced here. What we have to increase? We have to first increase the number of countries with the local disaster risk reduction data, then international cooperation and availability to the early warning system. That is something we have to do. So that are the 7 global targets here. Now when we talk about priorities here, priority में सबसे पहले क्या होगा? अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आप खुद सोचो practically, and I always say guys, when you talk about current affairs, ना specifically ESI current affairs, if I talk about here, or if I talk about here your government schemes, the most important thing is as much knowledge as you apply. जितना प्रैक्टिकली आप सोचोगे उतना ही बेहतर आप पढ़ पाओगे. अगर मैं आपको यहां पे बोलूं, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैंने बोला वी आर टॉकिंग अबाउट डिजास्टर infrastructure. We're talking about disaster related framework. So first thing we have to see is understand the disaster. ना what sort of disasters are there? Natural disaster है, man-made disaster. पहले disaster understand करो. Then you have to strengthen your governance so that you could manage that disaster. Because if I say we have to work toward the governance with regards to disaster, जब मुझे पता ही नहीं disaster क्या है तो मैं governance कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? तो ये वाला पार्ट आ गया, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस हियर. देन इन्वेस्टिंग इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. पहले आपने अंडरस्टैंड किया, यू हैव स्ट्रेंथन योर सिस्टम, देन यू हैव टू इन्वेस्ट देयर सो दैट दिस कैन बी रिड्यूस्ड, एंड देन यू हैव टू एनहांस द प्रिपेयरनेस so that you could build back better recovery, rehabilitation and reconstruction part here. And that is where if I say here how to understand that thing, I think better for that is just look at the example of Japan. जापान में हर 2 साल बाद सुनामी आती है, पर जापान किस तरह से उसको मैनेज कर रहा है, दैट इज समथिंग यू कैन हैव एन आइडिया हियर. एंड सेंडाई इफ आई टॉक अबाउट प्लेस इज आल्सो इन जापान. सो सेंडाई प्लेस ही जापान में बिकॉज 2015 में जापान ने ही इस चीज के ऊपर एक्शन लिया था बाय यूजिंग दिस सेंडाई फ्रेमवर्क. दैट इज वाई जापान इसमें काफी लीड भी कर रहा है, जापान ही इसको ज्यादा बेटर एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है. सो द फ्रेमवर्क हैंड्स विद 2030 एजेंडा एग्रीमेंट, दैट इज ऑन पेरिस एग्रीमेंट, Addis Ababa agenda and the new urban agenda, and ultimately sustainable development goals. So all these are being part of the Sendai framework also. Clear about this part? Clear about these 2 disaster initiatives guys, CDRI and Sendai framework? If it is clear guys, please give me a quick thumbs up in the chat section के साथ ये वाला part clear होगा, then we can move forward. Clear? चल, let's talk about my next question. That's question number 3. That is India has added Chichen, that is in Falodi, and Manar, that is in Udaipur, as the Ramsar sites. So now my first question to you is, before you answer me this specific question, how many Ramsar sites are there in India? Tell me how many Ramsar sites are there in India. Quickly guys, how many Ramsar sites? कितने Ramsar sites हैं इंडिया में, मुझे बताइए. Before we come to this specific question, because this is a basic question that can be asked you, how many Ramsar sites in India? So in total, we have 91 Ramsar sites now that are there in India. ठीक है, 91 Ramsar sites. Now the thing is, they are basically famous. So Chichen is famous for which part, and while which among the specific state has the highest number of Ramsar sites in India? Now if you know the answer, you get to the answer, that is Tamil Nadu जो है उसकी सबसे ज्यादा highest number of Ramsar sites in India, that is 20 in number, and it is famous for domicile cranes. So that is why my answer will become option number C here. ठीक है, Demoiselle cranes and Tamil Nadu will be the answer here. Now here if I talk about here, I think if you do not know what are these birds, that is fine. But this is the second part of this question. This is something that can help you in solving this specific question. Okay, तो टॉप में आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश with 10 states. Now if I talk about how many in terms of the overall number of Ramsar sites in the world, what is the rank of India? What is the rank of India in terms of overall number of Ramsar sites in the world? Can anybody tell me? इंडिया का रैंक क्या है जी? इंडिया रैंक 3rd ओवरऑल. एशिया में इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है. मैक्सिको और यूके के बाद इंडिया 3rd नंबर पे आता है. ठीक है, इंडिया इज एट 3rd नंबर आफ्टर मैक्सिको एंड यूके हियर. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट the Ramsar sites that have been added, obviously the names are important, Chichen, and the second one is your Manar. ठीक है. Now, if I talk about the India's relation with Ramsar Convention, so Ramsar site is, or if I talk about Ramsar Convention, was basically a convention that was signed in Iran in 1971 for basically managing the what, or managing the we talk about जो हमारे ponds होते हैं, जो हमारे आप कह सकते हैं जो हमारे वाटर वेटलैंड्स होते हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए ये कन्वेंशन यहाँ पे बनाएगी. Now see, the convention was came up in 1971, but India joined it in 1982 here.
So India's first Ramsar site was Chilika Lake, which is very, very important, and Keoladeo National Park, that is again in Rajasthan. Now this is again a question that can be asked to you, because now Rajasthan has 4 sites. So they can ask you a question that recently Kitchen and Menar has become the Ramsar site in Rajasthan. Please tell us, or can you tell me, which of the following Ramsar site was the first Ramsar site of Rajasthan, which also became the first site to be included in the Indian Heritage List or Indian Ramsar site here. So क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बन जाए क्योलाडियो नेशनल पार्क. तो देखिए राजस्थान में 4 हैं, क्योलाडियो, then it becomes सांबर, then we have your Kichar, and then we have your Mannar here. Total, I told you, Tamil Nadu has the maximum number of sites, followed by Uttar Pradesh. India is at 3rd rank, ठीक है, with UK having the highest number of Ramsar sites, followed by Mexico here. Ramsar Convention, as it has been written here, I have told you lot and lot of times. So ये चीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, एक चीज मैं और पूछता हूं, which can be asked in relation to Ramsar site is Wetland City Accreditation Program. So which are the 2 cities of India which got selected under the Wetland City Accreditation Program? It's again a part of Ramsar ना, Wetland City Accreditation Program. Ramsar से ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है वेटलैंड्स के ऊपर. बताइए कौन सी 2 सिटीज हैं इंडिया की? They are इंदौर एंड उदयपुर. Got this point, guys? So Indore and Udaipur are basically the 2 cities of India which got selected as a part of Wetland City Accreditation Program. और पहली बार इंडिया में से कोई सिटी जो है वो सिलेक्ट हुई है. अब यहां पे एक चीज का नाम और याद रखना, जोधपुर. I think it is Bhopal. Not Jodhpur, it was Bhopal. Bhopal was the 3rd thing which got nominated, but यहाँ पे इसको select नहीं किया गया था. तो इसके बारे में confirmation कर लेना. I think it was Bhopal. Just remember about this part. ये confirmation एक बार कर लेना. बाकी इंदौर and उदयपुर were the first one to be selected here. ठीक है, चलो. Let's begin with my next question for the day. That is question number 4. That is regarding the G7 summit. So 51st G7 summit has taken place in Kanakis, which is in Canada. ठीक है. So the question is, consider India's evolving in the global diplomatic engagements. Which of the following observation best captures the significance of India's participation in the G7 summit as an outreach country? Now, from this question itself, we came to understand that India has not be a part of G7 country. India इसमें क्या बना था? Outreach country. यानी कि India as a कनाडा ने उनको बुलाया था, outreach country था. तो मुझे बताइए इस कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है? India's continued invitation underscores its formal membership in G7 after its participation in all summits since 2019. India's participation is a symbolic gesture, only as outreach countries are not allowed to engage in the core policy discussions. India's G7 attendance reflects its rising global stature even without being a formal member, and aligns with Canada's role as this year's presidency holder. The G7 platform no longer includes the European Union, hence giving greater voice to outreach countries like India. Is it a part here? Then it's the thing is the 2025 summit marks the first time in India has been invited to G7 with an aim to induct as a permanent member replacing Russia. So यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे एक्चुअल में ऑप्शन नंबर सी सही है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द स्टेचर ऑफ इंडिया, दैट हाउ इंडिया हैज एनहांस, इंडिया का क्या ग्लोबल स्टेचर बढ़ रहा है वो यहाँ पे बताता है. दैट इज द मेन थिंग हियर. ठीक है. So if I talk about G7 countries, the first important thing is this is the 6th consecutive time India has been a part of this summit here. Now remember, India is not a part of G7, because if you talk about G7 countries, these are the countries here. ठीक है. That is Italy, Canada, France, Germany, Japan, UK and USA. So earlier it was G8, but Russia got expelled in the year 2014. ठीक है. So G7 was expanded to G8 by adding Russia, but later on 2014 में उन्हीं को यहां से इन्होंने आपको निकाल दिया. अब 1977 से यूरोपियन यूनियन जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है, बट विदाउट holding the rotating presidency here. If I talk about what is the important thing of G7, it supports 200 million women joining the workforce by 2035. This is what G7 is primarily focusing at this point of time. Talking about Group 7 countries, guys, अगर मैं आपसे बोलूं कि 51st summit कनाडा में हुई है, 50th summit कहां पे हुई थी? Where was the 50th summit of G7 that has taken place? Remember, the country name was Japan. So Japan hold the 50th summit, which is very, very important because that has taken place
previous year. अभी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? The reason being that because if you look at the global organizations, if you look at this global organization like G7, G20, BRICS, these regional organizations, they are very very important. And now each and every year we are seeing questions from these specific organizations in the examination. हमसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पे क्वेश्चन पूछा है, हमसे ये पूछा गया कि एशियन और बिम्स्टेक के कॉमन मेंबर्स कौन से हैं, हमसे ब्रिक्स पे सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, हमसे बिम्स्टेक पे सवाल पूछा हुआ है. So that makes us important that all these important organizations which are there are important for the examination. Now let's proceed towards my next question. Government of India announces the timeline for much awaited population census 2027 as per the official schedule, which of the following accurately reflects the commencement dates for two phases of the census, including the regions covered in the first phase. This is a very very interesting question, guys. Tell me what will be the answer for that. It's a very interesting question. So what will be the answer here? Answer here is option number E, none of the above. अब मैं आपको बताता हूं यहां पे कंफ्यूजन क्या है. यहां पे सबसे पहले सबको ये वर्ड का स्नो हिट रीजन्स, रिमेंबर, बट दैट इज वेयर the point lies here. The second statement is not correct because guys, if you talk about snow hit regions of India, Sikkim and Arunachal Pradesh are also the cities or states or union territories which are included here. But here if I talk about in the first phase, that is on 1st of October 2026, they are going to cover Jammu, Kashmir and Ladakh only. So Sikkim and Arunachal Pradesh is not going to be covered. That is why this is important. That is why this statement is wrong. Got that point? I can see majority of you have given me the answer option number B. Upasna, Gururaj, Mayank, Harshal, all of you have given me the answer option number B. That is the reason, guys. This keyword is very very important. It's not all snow hit regions. It is the snow hit region of Jammu and Kashmir and Ladakh which is going to be covered here. ठीक है? That is the point here. तो ये चीज यहां पे क्लियर कट लिखी है. फर्स्ट फेज में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के स्नो बाउंड एरियाज को आप कवर करोगे, ना कि सारे के सारे. फिर आ जाता है जी दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस एंड फर्स्ट टू इंक्लूड कास्ट एनुमरेशन सेंसस. नाउ इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हेन हैज बीन द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया टेकन प्लेस? कौन से ईयर में इंडिया का पहला सेंसस हुआ था? इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, what was the first time that the census was conducted in India? That was the year of 1882. With 1891 onwards, we came to a decadal census, which means after every 10 years, the census was taking place. Now, if I talk about then after independence, we made a Census Act of 1948, and after independence from 1951 onwards, after every 10 years, the census was coming. So the census, if I talk about this specific census, this was actually expected in the year 2021, but due to COVID, the data cannot be collected. So then it got delayed, and now what the government is saying is the population census for 2027 will be now be conducted in two phases. So पहला 26 में होगा, दूसरा 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगा. It's not about rolling out. It's about when you will be conducting the survey. That is the point you need to remember here. Okay, ji. Now let's talk about my next question here. The United Nations General Assembly elected the 5 countries as the non-permanent member of the UNSC. Against this backdrop, consider the following. India has served 8 times as a non-permanent member of the UNSC. Which of the following pair or terms does not correctly correspond with India's past tenures? तो आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा ऐसा टेन्योर है जिसमें इंडिया मेंबर नहीं था. Quickly, guys. So tell me what will be the answer here. So answer here is going to be option number C. 1989 and 1990 will be the answer here. ठीक है? 1989-90 India was not a member here. Now if I talk about here, what are the new members that have been added? तो ये 5 countries elect हुई हैं. Bahrain, Colombia, ठीक है जी, Democratic Republic of Congo, Latvia and Liberia. So these are the 5 countries that have been added, and among them, the question that can be formed can be on Latvia, because Latvia has become the non-permanent member for the first time. And if I talk about India here, so India is being a part of this ऑर्गेनाइजेशन. तो इंडिया इससे पहले 8 बार बन चुका है. ये लिखा देखो 50, 51, 67, 68, 72, 76, 77, 78, 84, 85 एंड 11, 12 और 91, 92. अब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो यहां पे एक चीज याद रखना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज
Now the question that I have made you is one of the toughest question and obviously it's good that जब आप बोल रहे हो कि सर इसको skip कर देना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो skip कर देना, ये मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये नहीं याद हो पाएगा, मुझे भी पता है। देखो याद करने वाले बच्चों को हो भी जाएगा, बट पॉइंट है कि क्या हमें इतना इन डेप्थ भी याद करना होगा? अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ही अभी कंफ्यूजन आ रही है तो छोड़ दो, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला था बिकॉज ऑब्वियसली इन द एग्जामिनेशन जितना मर्जी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अगर आपने पढ़े भी हैं तो भी बहुत इन डेप्थ होंगे, तो वो आपको छोड़ने भी हैं। अगर हम बात करें यूएनएससी के, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, इट इज वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। द यूएनएससी comprises of 5 permanent members and 10 non-permanent members. What are these 5 permanent members? That is easy for us to remember. China, France, Russia, UK and USA. These were the 5 permanent members of UNSC which we need to address here. ठीक है जी, ये एनुअली कंडक्ट करवाए जाते हैं बाय द सीक्रेट बैलेट्स एंड रिक्वायर अ 2/3 majority. That is the important thing you need to remember here. Now let's talk about the next question here. Recently the agreement on fishery subsidies moved closer to enforcement after Nicaragua became the 101st member of the WTO. Very very important, 101st members of World Trade Organizations to accept it, that is fisheries एग्रीमेंट और फिशरी सब्सिडीज। अब इसके कंटेक्स्ट में आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। द एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड एट WTO's 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जेनेवा। द एग्रीमेंट एम्स टू एस्टैब्लिश लीगली बाइंडिंग ग्लोबल रूल्स टारगेटिंग द एलिमिनेशन ऑफ harmful fishery subsidies, and India has formally accepted the agreement on fishery subsidies in 2024. So which of the given statements are correct here? Right answer becomes option number, that is 1 and 2 are correct here because India has not accepted. ठीक है जी, इंडिया ने सबसे पहले बोला कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें तो देयर आर 10 मोर एक्सेप्टर्स, अगर वो हो जाएगा तो दिस एग्रीमेंट विल केम इनटू फोर्स हियर। Talking about WTO Fish Fund activation, so now the WTO Fish Fund is expected to open a call for proposal from developing and least developed countries for voluntary contribution। अगर हम बात करें तो जो फंड है ये WTO बेसिकली इन पार्टनरशिप विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, they are operating this fund. Okay, so let's talk about my next question. Question number 8, that is on India's social protection coverage. The data has been released in the month of June 2025. Now tell me in context of this thing, which of the following statements regarding India's social protection coverage in June 2025 and the International Labour Organization is correct? ठीक है जी, tell me. So India's social protection coverage increased from 19% to 64.3% in 2025 with the fastest expansion globally. The ILO's social protection coverage includes only 5 categories, which is health protection, old age pension, employment injury benefits, sickness benefits, family and child benefits. क्या 5 हैं या और भी हैं? Then because India was the first country to update its 2024 social protection data in the ILO statistics database. The International Labour Conference is held annually in New York, where ILO's highest decision-making body meets. न्यूयॉर्क में होती है, लंदन में होती है। Then comes the phase 2 of the social protection data pooling exercise in India, focused exclusively on pension scheme. Which of the given statements are correct here? The right answer will be option number A, because India's social protection coverage increased from 19% to 64.3%, approximately 64%, which is the highest expansion or fastest expansion done by any specific country here. Now, when I talk about this specific thing, important is first of all, there are not 5 categories, there are basically 9 categories on which your social security has been evaluated by ILO. These include your health protection coverage, your sickness benefit coverage, your old age pension, unemployment benefits, employment injury benefits, family and child benefits, maternity, disability and survivors benefits here. Now coming to this part here, International Labour Organizations basically includes data from 32 central and state schemes. ठीक है जी, ऑफ विच 24 pertain टू पेंशन। ठीक है, तो इन्होंने इन स्कीम्स को बेसिकली एनालाइज किया। ठीक है जी, दैट इज थिंक हियर। अगर हम बात करें, इंडिया हैज हाईलाइटेड द सोशल प्रोटेक्शन डाटा पुलिंग एक्सरसाइज, जहां पे फेज 1 जो था वो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के ऊपर था और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर था। इंडिया पहला कंट्री बन चुका है जिसने 2025 के सोशल प्रोटेक्शन डाटाबेस के ऊपर हमारा अपने आप को अपडेट किया है। रिमेंबर इट इज 2025 नॉट 2024, और ये ILO का क्राइटेरिया है। And it should be must be backed by the legislation, cash based and active, and it must be verified 3 years. 3 साल बाद उनका सीरीज डाटा जो है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। Let's talk about the International Labour Organization. As I told you, it was an organization that was founded in 1990 by the Treaty of Versailles,
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन हुई थी। उसके बाद हम बात करें जेनेवा में इसमें हेडक्वार्टर है एंड इट इज द ओनली ट्राइपेटेड यूएन एजेंसी। वहां पे क्या क्या होता है, आपका गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड योर वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर बीइंग पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक organization. Now let's talk about my next question here. Recently, the 29th meeting of the Financial Stability and Development Council has taken place. The idea for establishing this Financial Stability Forum was originally proposed by which of the following committees? You have to tell me about that thing. अब ये करंट से आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आया है जो कि हमें एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। So what will be the answer here? That is actually ऑप्शन नंबर पे रघुराम राजन कमेटी के बेसिकली आपके ये ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रघुराम राजन कमेटी योर एफएसडीसी came into existence. So it came into existence in 2010 and in 2008 there was the recommendation given by Raghuram Rajan committee, who was the former governor of RBI, that we should create Financial Stability Development Council. It is, as I am saying, to maintain your financial stability and we want to ensure that there is inter-regularity coordination. Coming to the thing, Union Finance Minister will be the chairperson here और FSDC की मैं सब कमेटीज की बात करूं तो वो चेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की सब कमेटी इज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई. कैन यू टेल मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बेसिक क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू. अब आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं आपको बताऊं इतने बेसिक क्वेश्चन भी काफी बार बच्चे गलत हो जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए बार बार रिवाइज कराऊंगे पता हो जाए. गवर्नर कौन है जी आरबीआई के? इजी क्वेश्चन, संजय मल्होत्रा जी. दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. सेबी, रोहिन कांता पांडे. ठीक है जी. देन इफ आई टॉक अबाउट हु इज द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडी. नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी गोइंग फॉर पीएफआरडी एग्जामिनेशन. कैन यू टेल मी हु इज द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडी? चलो फटाफट में बताओ मुझे चैट सेक्शन में पीएफआरडी के चेयरमैन कौन है. तब तक वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Question number 10. In recent amendments to the Special Economic Rules of 2006, there is an important amendment that has been made where, with regards to semiconductor and electronic components manufacturing, the minimum land requirement for special economic zones, which are exclusively be set up for semiconductor and electronic component, has been reduced from how many hectares to 10 hectares? ठीक है जी, बिल्कुल सही. सुब्रमण्यम रमन जो है, एस रमन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. एस रमन इज एक्चुअली द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडी. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन गाइस, द आंसर इज फ्रॉम 50 हेक्टेयर्स योर land requirement has been reduced from 50 hectares to 10 hectares. Now coming to this thing guys, a major amendment has been proposed here. If I talk about what are the relaxations that have been given here, let's try to quickly understand this thing. Relaxations have been given. First of all, special economic zone land has to be completely free from any legal claims. अब उन्होंने बोला अगर लीज पे भी है तब भी फाइन है. Then comes the inclusion of free of cost goods in the net foreign exchange calculation. Now the point is, only paid goods were considered earlier in calculating a unit's net foreign exchange. Now it says if the goods received or supplied for free will also be counted here. Then if I talk about permission to sell in Indian domestic market, then it is said the objective is because the semiconductor industry is highly capital intensive. तो हमने उसको क्या बोला है कि यार आप इंडिया में भी कर सकते हैं after paying the required duties here. The important part was minimum land requirement that has exclusively been reduced from 50 hectares to just 10 hectares because we want to promote semiconductor mission. We want to promote the manufacturing of electronic component in India. Okay. Now if I talk about the special economic zone rules, very important because the question has been asked in NABARD examination previous year. तो special economic zones की बात करें, सबसे पहले बात रखना कि इंडिया was among the first Asian nationals जिन्होंने export processing zone मॉडल को अडॉप्ट किया था. 2005 में हमने बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है उसको लेके आए. ठीक है. ऑब्जेक्टिव वही है कि हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सके, उसके लिए हमने एक स्पेशल प्लेसेस रखी जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, which came into force in 2006. Now the primary objectives, if I talk about, they are basically how you could promote exports, how you could attract your domestic and foreign investors, how you could generate employment, and the important thing, developing a world-class infrastructure. Now here if I talk about, the governance is a three-tiered administrative structure, that is board of approval committees, development commissioners. So these are the important things you need to remember here. ठीक है जी. Each special economic zone is functionally divided into a processing area where production and service units are operate, and a non-processing area which hosts infrastructure support like housing, roads and other amenities.
ठीक है. So this is the important thing you need to remember here with regards to special economic zone here. Now let me proceed towards my next question, that is India was elected to serve as the UN ECOSOC. ठीक है, to serve as the UN ECOSOC for the term of 2026 to 2028. In this context, which of the following is not among the 5 regional groups which are used for equitable geographical representation in the ECOSOC elections, Economic and Social Council elections? Tell me. अफ्रीकन स्टेट्स, एशियन अफ्रीकन स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स या फिर ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों, एक्चुअली अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स को ग्रुपिंग नहीं है यहां पे. अगर हम बात करें ग्रुपिंग्स कौन सी हैं, तो सबसे पहले ये 5 ग्रुप्स हैं, विच आर अफ्रीकन स्टेट्स, योर एशिया पैसिफिक स्टेट्स, योर ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, योर अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स. सो नॉर्थ अमेरिकन पार्ट नहीं है, that is a part of Latin American and Caribbean states, and then you have Western European and other states. So these are the 5 groups here. Coming to the thing, India has now been elected for the term of 2026 to 2028, and India will join here its neighboring countries like Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. तो इनको इंडिया ज्वाइन करने वाला है वहां पे. अगर हम बात करें तो इन टोटल वी हैव 54 मेंबर्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945. ठीक है, चलो let's look at my next question, question number 12. The first assembly of International Big Cat Alliance has recently taken place, and it has ratified its headquarter agreement. जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका एग्रीमेंट क्या है, ये इंडिया में हेडक्वार्टर बनने वाला है. ठीक है जी. Then and formalized its membership structure. Based on this, consider the following statements regarding the IBCA member countries. Tell me. ठीक है, which of the above mentioned countries have ratified or formally been added to the International Big Cat Alliance as of June 2025? So what will be the answer here? यहां पे आंसर बन जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4 and 5. Because Argentina is not a member here of International Big Cat Alliance. It's a very basic thing, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है. It was an idea that was again proposed by the India, that is basically talking about 7 big cats. Which are those 7 big cats? Cheetah, lion, jaguar, puma, then you have snow leopard, you have leopard, ठीक है जी, एंड लास्ट इज टाइगर. सो ये आपने प्रोमिनेंट 7 बिग कैट्स को बेसिकली आपने यहाँ पे कैटर किया है. देन इफ आई टॉक अबाउट हियर गाइस द डेट ऑफ ट्रीटी, सो इन 23rd of January 2025 IBC officially became a treaty based intergovernmental organization. Coming to the member countries, so if I talk about here Eswatini, Guinea, India, Liberia, Nicaragua, Somalia and Suriname, they have basically become the formal members because they have ratified the thing also. ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी तो नेपाल भी इसको ज्वाइन करने वाला कंट्री बना था, बट नेपाल ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है. टोटल कंट्रीज इफ आई टॉक अबाउट हु आर कंसेंटेड, देयर इज सेइंग दे आर 27 कंट्रीज हैव सेड दैट वी विल बी बिकमिंग द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड बाय एनटीसीए फ्रॉम द गवर्नमेंट. इंडिया की तरफ से एनटीसी इसको ऑपरेट करेगा. ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13. एंड ऑल्सो डू लेट मी नो द चैट सेक्शन, आप लोग थक तो नहीं गए? यू नीड अ वाटर ब्रेक बिकॉज आई एम सीइंग दैट काफी लोग थक गए हैं या कुछ हो रहा है. आई एम सीइंग द रिस्पॉन्सेज आर गेटिंग लो हियर. व्हाट इज द रीजन गाइस? थक गए हो आप लोग? हाँ, क्या हुआ है? If you want a water break, we can take a water break. But I want all of you to participate because I think we have just 30 questions from ESI. फटाफट में कुछ questions करेंगे, but I want all of you to understand this point because they are important है. ठीक है जी, चलिए जी, चलो. Let's try to the question next here. That is safe tourism destination for women project was reviewed in Madhya Pradesh, focusing on ensuring women's safety at tourist destination. The project is funded under NIRBHAYA fund. Now question is very easy. Which of the following agencies responsible for administering the NIRBHAYA fund here? Very easy question. We all know the answer. The answer is option number B. Department of Economic Affairs under Ministry of Finance is actually monitoring or administering the NIRBHAYA fund. ये गलती मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गुरुराज. NIRBHAYA fund is set up under Ministry of Women and Child Development, but the administration of the fund, because finance की बात आ गई तो Ministry of Women and Child Development नहीं है. जब आप फाइनेंस की बात कर रहे हो तो वो आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. Getting that point, that is the administration is done by Department of Economic Affairs under Ministry of Finance. But if I talk about this NIRBHAYA scheme, that was actually a scheme that was part of Ministry of Women and Child Development. ठीक है, चलो जी. So NIRBHAYA fund was launched in 2013 to improve the safety and security of the women. If I talk about here, the ministry was Ministry of Women and Child Development. It is a non-lapsable fund
which is administered by Department of Economic Affairs under Ministry of Finance here. Got that point? That's a very important thing and I was saying that is why मैंने बोला बहुत आसान क्वेश्चन है because बहुत बच्चे गलती करेंगे. ठीक है, चलो जी, let's look at the next question. Recently, study by VV Giri National Labour Institute has projected a rapid expansion in India's gig economy. As per their estimates, the number of gig workers is expected to reach how much by 2030, which will be constituting about what percentage of the non-agriculture workforce in India? Chalo ji. What will be the answer here? The answer here is that is option number B, 23 million or 7% is the answer here. As per their report, it is being said that gig workers जो 23 million तक पहुंच सकते हैं and it will be constituting about 7% of the non-agricultural workforce in India. ठीक है? That is the answer here, option number B here. Let's talk about my next question. ठीक है जी? So by 2030, 23 million or 7% here and by 2047, we are expecting it to be around 62 millions. ठीक है? And it could potentially reaching 90.8 million in a boom scenario. Next question is about the considering the following Amitabh Kant's resignation from the India's G20 Sherpa and Vietnam's inclusion as a BRICS partner country. Now this is the sort of a question we have handpicked from the previous year questions जो कि हमने उसी बेस पे डिजाइन किया है. क्वेश्चन पूछा था उन्होंने एशियन और बिम्स्टेक में यहाँ पे कौन से मेंबर कंट्रीज हैं. हमने यहाँ पे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंट्रीज मेंबरशिप इन G20 and BRICS here. A similar sort of question, but we have not asked which two countries are common members. We have asked about the membership here. ठीक है, so that is an important thing. India is a member of both G20 and BRICS here. Brazil is a member of both G20 and BRICS here. South Africa is a member of BRICS but not of G20. Is it right? Iran is a member of both G20 and BRICS. Is it right? Or Indonesia is a member of both G20 and BRICS? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वी नीड टू प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. बताइए जी, व्हाट विल बी द आंसर हियर? Answer here becomes, guys, that is option number A. That is 1, 2 and 5 is the right answer because Iran is not a member of G20 and on the contrary South Africa is a member of G20 because South Africa की बात करो, अफ्रीकन यूनियन को तो इंडिया ही लेके आया था मेंबरशिप में. अफ्रीकन यूनियन को तो इंडिया ही मेंबरशिप में लेके आया ना, कि यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन को लेके आता है. अफ्रीकन यूनियन में तो हमारा साउथ अफ्रीका भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इंडिया ने बेसिकली अफ्रीकन अपने टाइज को बढ़ाया यहाँ पे. ठीक है. So if I talk about the BRICS and G20, the important thing is now I will not say that you have to remember all the G20 countries. That's not the thing here. It is again a simple basic thing है, थोड़ा सा basic knowledge apply करोगे, you can cover this sort of question. Now coming to the question here, G20 if I talk about was established in 1999. ठीक है जी. 2008 in Washington you have your first summit. In 2011 it became an annual summit which is now taking place every year. We have 19 countries plus European Union and African Union as the two international organizations is a part here. I've given you the name of these 19 countries, but again I am saying कि अब आप पूरे 19 के 19 याद करने मत बैठ जाना. Just have a brief idea. India was the president in G20 for 2023. 24 it is Brazil. ठीक है. And Trica if I talk about here because 2024 it is Brazil. Now because South Africa is hosting the summit for 2025, तो यहां से ही आपको साउथ अफ्रीका वाला पार्ट याद हो जाएगा. Then USA become a member in 2000. USA, the meeting is going to take place in 2026 here. Coming to BRICS, guys, as I told you, important thing is about BRICS here. So Vietnam has joined as an observer member of BRICS here. ठीक है जी. Now in total we have BRICS की बात करें तो Indonesia is a member here. In total, guys, remember we have 10 members of BRICS. That is very very important because why I am saying this thing. In the month of July, when your BRICS annual summit has taken place, the point to be noted was that we were expecting कि Saudi Arabia member बन जाएगा, but Saudi Arabia member नहीं बना है. Saudi Arabia ने formal ratification नहीं किया है. So now, as of now, Indonesia becomes the 10th member of BRICS here. Initially, it was Brazil, Russia, India, China. Okay, then 2010 we came with South Africa, which made it from BRIC to BRICS here, and then we have the other 5 members which are added later on. Iran is a member, UAE is a member. Egypt is a member, Ethiopia is a member, and then we have Indonesia, which became our 10th member of BRICS
कंट्रीज. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मेंबर्स. ब्रिक्स के 10 याद रख लो, इंपॉर्टेंट है. उसके 20 ना याद हो, बट इसके 10 तो याद कर लो. दैट वी कैन रिमेंबर. ठीक है, चलो. Let's talk about my next question here. Recently, the Ministry of Women and Child Development reviewed the implementation of a pioneering women-centric safety initiative being carried out across 50 tourist destinations, that is on Safe Tourism Destination for Women project in collaboration with UN Women and the State Police. ठीक है जी, आपको मुझे बताइए कौन सी स्टेट ने इसको इंप्लीमेंट किया है. The answer is, we know the answer, that is मध्य प्रदेश, because अभी तो पढ़ के आए इसके बारे में. It's just a few news earlier we have talked about this question. So Madhya Pradesh is the answer here. Okay ji, the Safe Tourism Destination project, the objective is where Ministry of State for Women and Child Development has reviewed this thing. It's the first project sanctioned under NBFC fund. And if I talk about, these are the key features you need to remember here. We have to train 40,000 women, skill development for 10,000 women, and we will create 5,000 tourist related jobs under this specific initiative. Let's talk about my next question. During the 113th session of the International Labour Conference, which has taken place in Geneva, which of the following convention was adopted as the first ever international labor standard, specifically which is designed to prevent exposure to and protecting the workers from biological hazards in the workplace? So tell me what will be the answer here. ठीक है जी, I think it is a very easy question. All of you might know this answer. बहुत आसान सवाल है, मैं इसको मुश्किल नहीं बोलूंगा, आसान सवाल है. ब्रिक्स वाला सवाल मुश्किल था, बट ये आसान है. Answer is option number D, that is Convention on Biological Hazard in the Working Environment is the right answer here. Okay, so if I talk about the thing guys, 113वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जेनेवा में हुई थी. फर्स्ट एवर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड which is by the name of Convention on Biological Hazards in Working Environment has been adopted. Objective simple as the name is saying, we want to prevent exposure and ensures the worker protection from the biological hazards. Okay. Now the important thing is the Convention 192 is legally binding and calls on member states to formulate policies and enhance preparedness for accident outbreaks and epidemics and pandemics with regards to biological hazards here. Let me talk about my next question. The Ministry of Road Transport and Highways has announced the launch of a Fastag based annual passes for non-commercial private vehicles, which will be aiming at reducing the congestion at toll plaza. As per the announcement, the pass is priced at what amount, and is valid for either 1 year or how many highway trips, whichever occurs earlier. Tell me guys, what will be the answer? So what will be the answer here? Answer here is, that is option number B. It is rupees 3,000 annual pass that will be created here, and that is for maximum. ठीक है जी, या तो 1 साल के लिए बनेगा, या फिर अगर आपके 200 ट्रिप्स हो जाते हैं तो उसके लिए वो वैलिड है फॉर मैक्सिमम 200 ट्रिप्स और 1 ईयर. इट विच एवर कम्स अर्लियर इट इज गोइंग टू बी डन टिल द स्पेसिफिक, उसके लिए बनाया गया. ठीक है. Now if I talk about Fastag, it's an RFID, that is radio frequency identification based इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम हियर. ठीक है जी, वैलिडिटी कितनी है, 5 साल की होती है, और इंपॉर्टेंट पार्ट है 1 व्हीकल फॉर फास्टैग. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड इन 2024 एंड विद दिस आई थिंक मैनी ऑफ अस नो कि हम सबके साथ हुआ होगा, कईयों के क्या था फास्टैग गलत लगे हुए थे तो वो सारे बंद हो गए थे 2024 में. ठीक है, चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. इंडियाज फंड इन स्विस बैंक सर्ज टू the Swiss dollar of 3.5 billion, marking the highest ever since 2021. Now consider the following and identify which of the following countries are not among the top 3 countries by the Swiss bank holdings in 2024. Remember, the question is asking not among the top 3 countries. So USA, Germany, UK, France and West Indies. Which among the following are not among the top 3 countries? France, Germany. Let's see. Actually saying France and Germany. What about others guys? The answer here is absolutely right. That is France and Germany are not a part here. Now who are the member countries? It is these 3 countries: United Kingdom, United States and West Indies. अब आप तीसरा नाम तो आप इमेजिन नहीं कर सकते. आप बोलोगे वेस्ट इंडीज तो पक्का ही, वेस्ट इंडीज कहां से होगा, जर्मनी फ्रांस होगा. तो बेसिकली अगर आप बात करें एज पर द स्विस नेशनल बैंक डाटाबेस, दीज आर टॉप 3 countries which have maximum holdings. Now India's total fund if I talk about, it is around 3.5 billion. ठीक है जी. कस्टमर डिपॉजिट 340, मतलब आप कह सकते 11% बड़ा है.
फंड वाया बैंक्स कह सकते हैं, ट्रस्ट कह सकते हैं, या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस के कितने पैसे यहाँ पे पड़े हैं. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू रिमेंबर. India's global rank rose to 48. That is something you need to remember here. We always talk about Swiss Bank, Swiss Bank, Swiss Bank. India तो 48 नंबर पे अभी यहाँ पे 48th. And we say कि यार, but फिर भी rise हुआ है for talk about. So peak holding was in 2006 when it was 6.5 billion. तो कहीं ना कहीं पैसा हम वापस लेके आ रहे हैं, but that is something still we are at 48th place. ठीक है जी. So India Switzerland Financial Information Exchange, so automatic sharing has been done since 2018, which is annually from September 2019. आपको डाटा दिया जाता है स्विस बैंक के द्वारा. From that is where we get to know about these things. Okay, चलो, let's talk about my next question here. That is, which international agency has been highlighted as the nodal agency to lead the observance of International Day Against Drug Abuse, illicit trafficking, and released the World Drug Report annually? So this is something I could say GA बेस्ड क्वेश्चन है, बट अगेन इट्स रिलेटेड टू ESI, नशा मुक्त भारत अभियान. ठीक है जी, एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? दिस इज एन इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिसर ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC. उन्होंने ये बेसिकली कह सकते हैं इंटरनेशनल एजेंसी जिन्होंने हाईलाइट किया नोडल बॉडी टू लीड द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हियर. ओके, तो कमिंग टू इंडिया, वी हैव an initiative by the name of Nasha Mukt Bharat Abhiyan, which is an initiative under Ministry of Social Justice and Empowerment. Coming to the day is celebrated on 26th of June, ठीक है जी, and it was declared as an international day on 1987. Theme क्या है? Break the cycle and stop the organized crime. Let's talk about my next question. Question number 21. And now guys, let's come to the final last 10 questions of the day. This is a question which is very very important if you are preparing for NABARD examination, because political system, Indian politics से NABARD में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Now the 25th meeting of the Central Zonal Council has taken place in Banaras or Varanasi. Which of the following states are members of the Central Zonal Council? It is Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. Now tell me which of the given are the members of Central Zonal Council. तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 and 5. Jharkhand is actually not a part of the Central Zonal Council here. If we talk about here guys, there are 5 councils that are there in India. That we have Northern Council, Central, Eastern, Western and South Zonal. तो वेस्टर्न में आता है राजस्थान गुजरात वाला एरिया, ईस्टर्न में आ जाता है आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल. ठीक है, अगेन आई वुड से दिस इज अ क्वेश्चन जो कि बहुत मुश्किल है, तो बेटर है इसको छोड़ दो. अगर नहीं पता तो अच्छी बात है. फिर ये हमारा नॉर्दर्न काउंसिल जिसमें हम लोग आते हैं, देन कम्स दिस पार्ट ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट हियर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न वी हैव अ सेपरेट बॉडी दैट वाज सेट अप इन 1972 बाय द नेम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हियर. ठीक है जी, देन वी कम अबाउट जोनल काउंसिल. इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि लीगल बॉडी है जो कि स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर बनी थी, और ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि एडवाइस करती है बेसिकली फॉर द बेटरमेंट हियर. ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? चेयरमैन होते हैं इसके होम मिनिस्टर, देन वाइस चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर, जितने भी हैं वो सारे वाइस चेयरमैन हो जाते हैं. मेंबर्स हैं जी चीफ मिनिस्टर और उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर फॉर अ स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज. अगर हम बात करें एडवाइजर कौन है, एक मेंबर नीति आयोग से आता है, एक चीफ सेक्रेटरीट आते हैं जिसको चीफ सेक्रेटरीट एंड डेवलपमेंट कमिश्नर्स बोले जाते हैं, और फिर परमानेंट कमेटी में आ जाते हैं चीफ सेक्रेटरीज, विच एक्चुअली डिस्कसेस कि हमें क्या करना है. दैट इज द मेन थिंग. ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से हम लोग आप कह सकते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पे काम करना चाहते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस होता है. देन कम्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज ऑन MSME डे. इन द कंटेक्स्ट ऑफ MSME, in the context of global and India MSME landscape as highlighted during the MSME Day 2025 in June 2025, evaluate the following statement. MSMEs account for approximately 60 to 70% of global employment and 90% of all business worldwide. The Udyam registration portal was launched in 2020, which facilitates a free, paperless and self-declared process here. According to World Bank, the SMEs generate 3 out of 10 jobs in emerging markets. And then comes the next part. The Udyam Assist portal enables micro enterprise without GSTN to access formal credit and government support here. The question is, which above the statements given here are correct regarding the MSME council here? Sorry, not MSME council, regarding the MSME day here. Okay, chalo.
गुरु राजीव सिंह सर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स गाइस? कहां पे चलेगे तुम लोग? आ जाओ वापस फटाफट बताओ क्या होगा आंसर. A, G, D, A, A. 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. Let's see the answer. Answer is absolutely right. It is option number A. 1, 2 and 4 is the right answer here. Can you tell me why the third statement is wrong? बिल्कुल सही, because 3 नहीं, यहां पे 7 out of 10 jobs हैं. वो आता है वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से. अगर हम बात करें दोस्तों, एमएसएमई डे 27 जून को मनाया गया था. थीम थी एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमईज एज ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन. And if I say guys, MSMEs are important in context of, because अब इंडिया एमएसएमई सेक्टर पे बहुत फोकस कर रहा है. डेफिनेशन भी चेंज कर दिया एमएसएमई सेक्टर की, तो इंपॉर्टेंट है. लॉन्च है जी 2017 to raise awareness about the critical role of MSMEs. This day is being celebrated. If I talk about here, so basically India is branding this day as उद्यमी भारत MSME Day 2025. ठीक है जी. Now if I talk about 51% of MSMEs, they are operating in rural areas, spanning 31% on manufacturing, 36% in trade and services. ठीक है. They are the second largest employer in India after agriculture. That is something you need to remember here, because the straight factual based question can be asked here. उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में बना था, which offers free paperless and self declared process for registration. उद्यम असिस्ट पोर्टल जो है, that came in 2023, which is for registration of informal MSMEs so that they could get, ठीक है, to register the informal MSMEs और micro enterprises, so that they could avail the benefit of priority sector. इसको फॉर्मलाइज करने के लिए उद्यम असिस्ट पोर्टल आया. फिर आ जाता है जी आपका यशस्विनी कैंपेन, दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी बाय 2029, वेयर ऑन उद्यम एंड उद्यम असिस्टेंट पोर्टल यू आर प्रमोटिंग फॉर्मलाइजेशन एंड मेंटरिंग योर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दैट वाज सेट अप इन 2018, which is an initiative that was incubated. Incubated का मतलब क्या? आइडिया दिया था, नीति आयोग ने स्टार्ट इनिशियल सपोर्ट दी थी, बट देन इट इज नाउ वर्किंग इंडिपेंडेंटली एज अ under the public private partnership module, which is supporting the women entrepreneurs. And here what you are doing is you are providing them financial support, you are providing them mentorship support, you are providing them skilling, ताकि वुमेन्स आपस में इंटरेक्ट, मतलब वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इंटरेक्ट कर सके बाकी लोगों के साथ, ताकि वो अपने फंड्स को रेज कर सके. उसलिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके जी. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23. सो एज ऑफ जून 2025, NATO, again a very important organization, North Atlantic Treaty Organization. So NATO comprises of 32 member countries. Consider the following nations and assess whether they are among the 4 most recent countries, 4 most recent entrants to the alliance. तो क्वेश्चन बेसिकली है कि पास्ट 4, लास्ट 4 मेंबर्स कौन से हैं. Tell me what will be the answer here quickly guys. Not among the last 4 entrants. कौन से हैं जी? The answer is guys that is option number E, because all of these are the last entrants. तो यही ऐड हुए पहले. अब स्वीडन ऐड हुआ, फिर इससे पहले फिनलैंड, इससे पहले मॉन्टेनेग्रो, इससे पहले नॉर्थ मैकेडोनिया. These are the countries that have been added here. Okay जी. Now if I come here guys, if I talk about NATO was, this is the summit that has taken place in Hague. That is in Netherlands. It's for the first time the NATO summit has taken place in Netherlands. If I talk about here guys, तो डिफेंस इन्वेस्टमेंट कमेटी जो NATO की, उन्होंने बोला है कि अब हम 5% ऑफ जीडीपी जो है वो यूटिलाइज करेंगे इन द डिफेंस सेक्टर. एंड NATO, द बेंचमार्क ऑफ NATO इज दैट इज बेसिकली दीज आर द कंट्रीज व्हिच आर टॉकिंग अबाउट हाउ अपना डिफेंस अलायंस बनाते हैं. और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो स्टार्ट ही यहां से हुई थी कि यूक्रेन ने बोला था कि हम NATO का मेंबर बनना चाहते हैं, बट रशिया अपोज दैट थिंग एंड देन इट टर्न्ड इनटू अ रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है जी. कमिंग टू NATO guys, so there are total 32 members and these are the last 4 entrants. If I talk about Albania and Croatia 9, Montenegro, North Macedonia, Finland and Sweden is the latest entrant. Now if I talk about here, the important is headquarters is in Brussels, that is in Belgium. ठीक है जी. And current secretary is Mark Rutte. ठीक है. अब NATO पे भी क्वेश्चन काफी बार हमसे पूछा गया है, so that is again something important. I would say prominently वैसे GA का टॉपिक है, बट क्योंकि शायद समिट पहली बार हुआ था तो हमने यहां पे लिखा, बट इट्स प्रोमिनेंटली इट्स अ न्यूज व्हिच इज रेलेवेंट फॉर जीए सेक्शन मोर. ईएसआई में चांसेस थोड़े कम है, जीए में आने के चांस ज्यादा है. चलो जी.
As per the recent or as per the development surrounding the Asian Infrastructure Investment Bank in 2025, consider the following statements. Very very important because the important point was president ही बदला है, तो बहुत important है AIIB और direct question AIIB पे ही आ सकता है. The first same is Zhou Ziyai will begin her 5 years term as the president of Asian Infrastructure Investment Bank. Jin Lee Kin will step down after serving as AIIB's presidency for 15 years. At least 50% of AIIB's new project financing is directed towards climate related initiatives. Now tell me which of the given statements are correct here. The third statement, first two statements are just about appointments, but the third statement is very very important. If you know this data then it's important. अगर नहीं आ रहा तो question complicate हो जाएगा थोड़ा सा. So which of the given statements are correct? If I talk about here guys, answer is option number B, 1 and 3 is the right answer here. Okay, because if I talk about AIIB, it was launched in 2015, absolutely right. तो अभी 15 साल तो बनने को ही नहीं, तो 15 साल बाद कैसे स्टेप डाउन कर सकते हैं? ठीक है, जिन लेकिन was obviously the former president of AIIB, but he stepped after not 15 years, but he stepped after 10 years. It's a multilateral development bank which is focusing on infrastructure financing. AIIB is headquartered in Beijing, ठीक है, and it has 110 members and it does not include USA. That is a very important thing. अब आप AIIB और ADB में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं. ADB USA is a member here, but AIIB, which is a bank, Asian Infrastructure Investment Bank, USA is not a member here. If I talk about here, the AIIB, it is basically ये चाइना ने एक बनाया था बैंक, जो चाइना डोमिनेटेड बैंक है, तो यहाँ पे चाइना मेन फंड शेयरिंग है, दैट इज फॉलोड बाय इंडिया एंड रशिया है. ठीक है, सो इट इज डायरेक्टिंग एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स न्यू फाइनेंसिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शंस. एंड इफ आई टॉक अबाउट परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस वाज ग्रांटेड टू यूनाइटेड नेशन आल्सो इन 2018. ओके, चल let's proceed towards question number 25. According to the Bank of Baroda State Capex Outlook Report released in June 25, which projected revenue performance of Indian state considers the following state? ठीक है, which projected the revenue performance of Indian states consider the following states and their expected contribution to aggregate receipts here. Tell me, UP, Maharashtra, Madhya Pradesh and Tamil Nadu, which of the above are among the top 5 revenue contributors? Tell me ji. So what is the answer? Answer here is option number A, 1, 2 and 3 is the right answer here, because Tamil Nadu is not among the top contributor here. If you see here, the top contributors in financial year 26 are Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Karnataka. ठीक है जी. U जी, अब आप बताओ Q जी, तो याद है ना, Q जी किधर जा रहे हो? मायके जा रहे हो? कैसे याद कर लेना है ना. Q जी मायके से कर्नाटका याद रख लेना है. ठीक है, क्यों जी कर्नाटका, सॉरी मैं मायके जा रही हूं, अपनी मम्मी घर जा रही हूं, मायके मम्मी घर जा रही हूं, तो ऐसे याद कर लेना. KU दैट इज कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड देन वी हैव दिस टू थिंग्स दैट इज महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. ओके जी. नाउ इट इज बीइंग सेड दैट नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये जो है ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज अराउंड 0.4%. ओके, important thing to be addressed here, revenue receipts are projected to grow by 12.3%. 13 states are expected to get a post revenue plus here and 44.2% of states own tax. अगर हम बात करें GST डोमिनेंट पिलर है और हाई GST डिपेंडेंसी इंडिया में कहां पे है? नागालैंड, दिल्ली एंड बिहार. दैट इज हाई GST डिपेंडेंसी स्टेट्स आर दीज स्पेसिफिक स्टेट्स हियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइनल 5 क्वेश्चंस फॉर द डे. So the government of India has launched the Navya initiative for skilling adolescent girls. Which of the following states have been covered under the scheme in its pilot phase? Maharashtra, Gujarat, Assam, Rajasthan, Jharkhand. Okay. So what is going to be the answer here? आंसर है जी यहां पे ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 5 इज द राइट आंसर हियर. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस नव्या इनिशिएटिव. सो नव्या स्टैंड्स फॉर नर्चरिंग योर एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, which was launched by Ministry of Women and Child Development and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. If I talk about objective, is here to empower the girls aged 16 to 18 years through vocational training under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Coming to the pilot phase here,
It has taken place in 9 states, that is महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यार ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 9 स्टेट्स है जहां पे बेसिकली प्रोग्राम अभी इनिशियली स्टार्ट किया गया है। ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर्ड अ कॉन्क्लेव टू रिव्यू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग grievance redressal through platforms like e-nirvan. In which year was the e-nirvan platform launched by the income tax department? Important है जी निर्वाण प्लेटफॉर्म। चलिए, so what is going to be the answer here? आंसर यहां पे बन जाता है जी ऑप्शन नंबर सी। 2016 में ई निर्वाण प्लेटफॉर्म जो था वो फाइनली स्टार्ट किया गया था। If I talk about the revised monetary, the another thing to be revised is कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ पॉइंट्स निकाले। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो रिवाइज मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है वो बेसिकली हमने कर दिया इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 60 लाख तक आप जो है अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट 2 करोड़ एंड सुप्रीम कोर्ट 5 करोड़। दिस इज द न्यूज एक्चुअली दैट वाज सीन इन न्यूज हियर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ई-निर्वाण प्लेटफॉर्म, इट्स एन इनिशिएटिव दैट वाज सेट अप इन 2016 व्हिच इज फॉर ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक द टैक्स पे ग्रीवांसेस। अब ये टैक्स पे ग्रीवांसेस में चेंजेस क्या मैंने ये बता दी, और क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एंड टाइम लिमिट इज 30 डेज। ठीक है, तो टाइम लिमिट फॉर रिड्रेसल इज 30 डेज आफ्टर द कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड, योर कंप्लेंट हैज टू बी रिड्रेस्ड हियर। ओके जी, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन WASPI हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर हाउसहोल्ड इनकम सर्वे इन 2026। हु इज हेडिंग द टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप guiding on this survey? So we have talked about Raghuram Rajan committee. Now we have talked about the technical group who is actually technical expert for guiding on this household income survey. The name of the person is Dr. Sujit Singh Bhalla. Dr. Sujit S. Bhalla is the person who is actually guiding us on the Indian household income survey, जो कि 2026 में हमने schedule किया कि इसको हम release कर देंगे। Coming to the objective is to collect data on income distribution and reflecting the structural changes in Indian economy over the past 75 years is the thing to be remembered here. ठीक है जी, coming to the second last question and then Devanshu sir will be here for your GA part here. I hope many of you now will be waiting for general awareness part also. ठीक है, चलो। So the Employees Provident Fund Organization, if I talk about here, ठीक है, has increased the auto settlement limit for advanced claim under its automated system here. So tell me what will be the answer here. What is the revised limit up to which claims can now be settled without human intervention? Tell me guys. So is it 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh or 5 lakh? What will be the answer here? Tell me guys. Is it has been enhanced to rupees 5 lakh? Absolutely right. So what has been done is EPFO ने अपना ऑटो सेटलमेंट लिमिट जो है वो 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। एंड व्हाई द थिंग इज देयर, द फीचर इज सेइंग दैट नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लेम्स अप टू रुपीज 5 लाख। प्रोसेसिंग विद इन 3 वर्किंग डेज आपका चीज प्रोसेस हो जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर विड्रॉल्स मेड बाय EPFO मेंबर्स बिफोर द रिटायरमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज दिस इज द थिंग फॉर विच योर क्लेम्स कैन बी मेड, एजुकेशन, मैरिज एंड हाउसिंग पर्पस here. Okay, now let me come to the final question for the day, question number 30th. As of June 2025, in context of India's participation in this Shanghai Cooperation Organization, अब देखो अगर मैं बात करूं SCO के बारे में, आज ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है that Prime Minister India is going to visit China for the first time after your Galwan attack to attend the meeting of Shanghai Cooperation Organization. SCO तो आज ही न्यूज में आया है, तो आज पढ़ा भी रहा हूं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया's participation in Shanghai Cooperation Organization, Defense Ministers meeting consider the following statements regarding the role of China and the expansion of the organization. Now, China is the host of the SCO Secretariat, ठीक है जी, which is permanently located in Beijing. India and Pakistan joined SCO as a full-time member in the year 2017, and then comes China took over the presidency from India in 2023. So which of the given statements are correct here? अब यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आए थे SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की कौन से मेंबर है ये पता होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 here. We talk about here. ठीक है जी, coming to SCO, so India was not a founding member. India became a member in 2017 along with Pakistan here. If we talk about presidency, इंडिया के पास 23 में गई थी, कजाकिस्तान के पास 24 and 25 it was with China, the president here.
Coming to the members here, these are the full-time members of Shanghai Cooperation Organization. These are China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Uzbekistan, Belarus and Tajikistan. These are the 10 members here. Mongolia and Afghanistan are as present the observer members of SCO. Now coming to the point here, it is being headquartered at Beijing. ठीक है जी, और इसका ना याद रखना, जो डिफेंस मीटिंग होती है वो है RATS, Regional Anti-Terrorism Structure. RAT structure is very, very important, which is actually not in China. It is actually in Uzbekistan. That's in Tashkent. Okay, so it was formed in 2001, and it is a kind of an upgradation to Shanghai Form 5, which was formed in 1996 here. Okay, so that is important with regards to your ESI part here. ठीक है जी, और एक सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए और है, क्वेश्चन नंबर 31. चलिए जी, in context of UN80 initiative launched by the United Nations to improve its global relevance and efficiency, consider the following areas. Which of the following are not among the 7 thematic clusters by UN80 task force? Tell me what will be the answer here. And that's guys, इस क्वेश्चन के बाद दिवांशु सर बस बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं, तो बस वही आ रहा है इसके बाद. ठीक है, चलिए, what will be the answer? Answer is option number A, because only 2 is the right answer, which was the above one not सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका पार्ट नहीं होता. अगर हम बात करें UN80 इनिशिएटिव की, तो UN80 इनिशिएटिव मार्च 2025 में जो है वो स्टार्ट हुआ था टू कमेमोरेट द 80th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन व्हेन इट वाज सेट अप. इट वर्क्स अंडर 3 वर्क स्ट्रीम्स, दैट इज इंटरनल एफिशिएंसी, इंप्लीमेंटेशन रिव्यू एंड द प्रोग्रामेटिक परफॉर्मेंस हियर. सो इट बेसिकली वर्क्स ऑन 7 थीम क्लस्टर्स. ठीक है जी, जो कौन से हैं? पीस, humanitarian aid, development, human rights, training, research and specialized agencies here. Okay guys, so this is all about your ESI part here. So your finance is covered, your ESI part is covered. Now I will call Divanshu sir and he will be carrying forward from here with regards to your general awareness component. Okay, so till the time he is opening his document guys. ठीक है, आपके पास में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. आपके पास में कोई भी डाउट है, you guys can ask me a doubt till the time he is just till the time Divanshu sir is basically opening his presentation. Anyone, any doubt? And I hope आपको मजा आया होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी, because if you talk about these 2 components, specifically finance and if I talk about ESI, these are those components guys जिनमें थोड़ा सा ना आपको चीजें समझानी बहुत जरूरी है यार. समझना, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे. ठीक है ना, तो इसीलिए शायद लंबा भी चला जाता है ये सेशन, है ना. चलो, difficult obviously Upasana, देखिए there are some questions which we have put intentionally. The reason for that was because we want you guys to test yourself also. ठीक है जी. मयंक सिंह सर, आरबीआई नोटिफिकेशन लेट क्यों हो गया? देखिए मयंक, इसका अभी तक कोई भी, मैं आपको बोलूं, कोई फिजिबल आंसर तो किसी के पास भी नहीं. क्यों लेट हो गया? इट माइट बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो एक चीज थी कि आरबीआई ने बोला था कि शायद इस बार वो ग्रेड ए का पेपर भी ले रहे हैं, ग्रेड बी का हो सकता है कि शायद वो साथ में ले लें, शायद उनका कुछ ऐसा मन हो. और क्यों हुआ है एग्जैक्ट आंसर मेरे पास भी नहीं. मैं आपको ऐसे बोल दूं कि यार ये रीजन है, कोई ऐसा रीजन नहीं है. इट्स ओनली आरबीआई हु नोज द आंसर दैट व्हाई दे आर डिलेइंग द नोटिफिकेशन. ठीक है जी, चलो. सो आई विल नाउ बी आस्किंग दिवांशु सर टू कम फॉरवर्ड हियर एंड प्रोसीड विद द ओके. चलो, So hello everyone. So I hope that all of you are really enjoying the today's session. So we are into the revision session of the June 2025, right? And we are done with the ESI and finance part. Now we will be moving ahead for the next important part, that is a general awareness section. So as we have already mentioned so many times that the June month is really going to be very important for your upcoming examination. So अब June का GA part जल्दी से हम cover करते हैं, and today's session is going to be a rapid fire one. तो बेसिकली जीए पार्ट जैसा आप देखते हैं कि पेपर में 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने हैं आरबीआई के लिए, राइट? तो इसीलिए आज का जो सेशन होगा आपका वो एकदम रैपिड फायर फॉर्म में होगा. सो प्लीज इंश्योर कीजिए दैट ऑल ऑफ यू आर बेसिकली रेडी विद योर आंसर्स एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन बाय गिविंग मी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो चैट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है. So let's move ahead to the very first question of the today's session. पहला सेशन on the very first, पहला question on the first woman officer from the Indian Navy जिन्हें AD camp to the President of India appoint किया गया. So she has become the first such officer. What is the name of this person? That is what you have to tell me here in the chat box. So काफी easy questions है guys.
पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही इजी है और आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता है. व्हाट इज द राइट आंसर? सो पीपल आर सेइंग ऑप्शन यशस्वी सोलंकी इज द राइट आंसर. लेट्स वेट फॉर अदर्स एज वेल. व्हाट डू दे थिंक दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? So most of the people going with option B. So option B को lock किया जाए. Yes, option B, यशस्वी सोलंकी is the right answer. So she became the first women officer of the Indian Navy जिन्हें ADC अपॉइंट किया गया to the President of India. तो इसे हमने CT 360 सीरीज सेशन में काफी डिटेल में कवर किया था, बट आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज हम चीजों को इन डिटेल कवर नहीं करेंगे, बल्कि आज एक रिविजन सेशन है. सो वी विल बी ओनली assessing you whether you are able to retain all the important aspects or not. Okay, moving ahead. So the purple cap and orange cap in IPL 2025. So who are the winners? So we all know IPL 2025, right? Where Royal Challengers Bangalore defeated the Punjab Kings 11 to win the IPL 2025. You have to tell me here who are the purple cap and the orange cap winners in the 2025 edition. So these are basically Prasidh Krishna and Sai Sudarshan. So these are the people who are awarded the purple cap and the orange cap. So when it comes to the player of the tournament, it was Surya Kumar Yadav from the Mumbai Indians. Emerging player of the year was Sai Sudarshan from Gujarat Titans. Purple cap, that is the most wickets, the person who has claimed the most number of wickets. So उस person को IPL के अंदर purple cap दिया जाता है, right? So this is Prasidh Krishna from Gujarat Titans. The orange cap for the most number of runs scored by a person given to Sai Sudarshan, and then the fair play award was been won by Chennai Super Kings. So these are the most important award winners that we should remember from examination point of view, right? So IPL 2025, who was the winner? Royal Challengers Bangalore was the winner. That's it. Moving to the next question. The first green data center of our country was being launched in which one of the following places? So आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इंडिया का कहां पर बनाया जाएगा. So it will be launched in Ghaziabad. That is the right answer. Next question. The Indian state undertook dual policy action by granting OBC status. तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को OBC status दिया गया है by this particular state. What is the name of this particular state? They are also instituting reservation for Anganwadi supervisors. So what is the name of the state which has come up with this new rule where they have provided the OBC status to the transgender community? What is the name of the state? It is option B, that is Assam. Assam is the right answer. I can see in the chat box. Harshal, Fruity, Gururaj, Tripti, सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया. वेल डन गाइस. इसी तरीके से बने रहिए सेशन में, और आज मेरे पास अराउंड मोर देन 90 प्लस क्वेश्चन है आपके लिए फ्रॉम द जून करंट अफेयर्स. ठीक है, तो जून का जनरल अवेयरनेस पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम आपसे हमेशा कहते हैं लास्ट 3 मंथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू कवर ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Moving ahead, हमारे शिक्षक ऐप was launched recently in June 2025 under the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स एजुकेशन 3.0 पोर्टल. आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है. What is the administrative function for which the हमारे शिक्षक ऐप has been launched? ऑप्शन ए, करिकुलम को रिवाइज किया जाएगा रूरल स्कूल्स के अंदर, वोकेशनल एजुकेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट किया जाएगा स्कूल फैसिलिटीज का, देन वी विल मॉनिटर एंड इंश्योर ई-अटेंडेंस बाय द गवर्नमेंट टीचर्स. गवर्नमेंट टीचर्स की ई-अटेंडेंस को नोटिफाई किया जाएगा, एंड देन स्कॉलरशिप ट्रैकिंग एंड डिस्पर्सल सिस्टम फॉर SC/ST स्टूडेंट्स. तो हमारे शिक्षक ऐप, सो बेसिकली नाम से ही पता चलता है हमारे शिक्षक, दैट मींस जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया. सो दैट विल बी मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग अटेंडेंस बाय द गवर्नमेंट टीचर्स. दैट इज व्हाट द राइट आंसर इज. ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल. हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं. काफी बार बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सीन इन सो मेनी एरियाज दैट इट वाज बीन आइडेंटिफाइड कि काफी गवर्नमेंट स्कूल्स खाली रहते हैं, राइट. स्टूडेंट्स आर देयर बट टीचर्स आर नॉट देयर. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर एंड टू टाइटन द रूल्स फॉर द टीचर्स, हमारे शिक्षक ऐप के अंदर उनकी अटेंडेंस को मॉनिटर किया जाएगा ऑफ द गवर्नमेंट टीचर्स. दैट इज व्हाट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज यूपीएससी प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव को रिसेंटली लॉन्च किया गया. उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी प्रतिभा सेतु? फर्स्ट स्टेटमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ यूपीएससी एग्जाम रिजल्ट्स, skill based online training for pre-exam preparation, second chance employment facilitation for non-recommended candidates, compilation of the past toppers, and then counseling support for exam stress management. So पांचों ही काफी important areas हैं, but what is the key objective of
UPSC Pratibha Setu initiative. Why exactly this initiative has been launched by UPSC? The right answer is सेकेंड चांस एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन फॉर नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। गाइस, हर साल ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो रिकमेंड नहीं हो पाते थ्रू द यूपीएससी, तो उनके लिए एक सेकेंड चांस किस तरीके से हम बना सकते हैं, सो उसकी लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, राइट। सो ये इनिशिएटिव है यूपीएससी का, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 2018 में इसे इनिशियली लॉन्च किया गया था अंडर द पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। सो आई होप दिस स्टैंड्स फॉर प्रतिभा की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। सो दिस इज व्हाट प्रतिभा स्टैंड्स फॉर, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन bridge for hiring aspirants, right? That is the important part here. Moving ahead, the Indian business leader who was being given the US India Strategic Partnership Forum द्वारा इन्हें लीडरशिप अवार्ड दिया गया। So US SPF ने ये लीडरशिप अवार्ड दिया है, किस पर्सन को दिया है ये हमें आइडेंटिफाई करना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। Let's see who will be giving me the right answer to the question number 7. Everybody is going with Kumar Birla, KM Birla. Absolutely right. KM Birla is the right answer. So he was being given the Global Leadership Award by the United States India Strategic Partnership Forum. He has been given this award for improving the bilateral relations and जो हमारी दोनों ही साइड में जो कंपनीज हैं उनके आपस में जो ट्रेड डील्स हो सके, सो दैट इज वाई इनका जो रोल है उसे रिकॉग्नाइज किया गया, इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियाज फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, जिसको कमीशन किया THDCIL ने, कहां पर कमीशन किया गया है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं 5 लोकेशंस आपको दी गई हैं। सो यहां पर जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को कवर करते हैं दोस्तों, हमें इंश्योर करना है कि कीवर्ड पर हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। यहां पर बात है फर्स्ट यूनिट, कौन सी? इंडिया की फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। तो ये कमीशन कहां हुआ? जब ऐसी कोई चीज पहली बार कमीशन होती है, कहां होती है? दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, राइट। राइट आंसर इज टिहरी, उत्तराखंड। सो टिहरी उत्तराखंड के अंदर इसे कमीशन किया गया था। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट गल्फ कंट्री टू इंट्रोड्यूस पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली गल्फ कंट्री का क्या नाम है? द नेम ऑफ द कंट्री इज ओमान। ओमान इज द राइट आंसर। तो इसे 2028 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। 5% रेट लगाया जाएगा इंडिविजुअल्स की अर्निंग पर, जो 1,09,000 एनुअली से ज्यादा जिनकी अर्निंग्स हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। 2028 से 5% इनकम टैक्स लगाया जाएगा और ओमान ऐसा पहला देश बना है गल्फ नेशंस के अंदर जिन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स को इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट पार्ट, सो इफको साइंड अ 7:3 रेशियो जॉइंट वेंचर विद द ब्राजील्स नैनोफर्ट, जिसके अंदर ये पहला ओवरसीज नैनो प्लांट बनाएंगे। सो गाइज, इफको पहला नैनो प्लांट बनाने वाला है इंडिया से बाहर। Where exactly it will be doing this? That is what we have to see here. What is the name of this place? The name is Curitiba. Absolutely right. Curitiba is the right answer. Next question. World Bank ने $50 million किस कंट्री को दिए हैं for enhancing educational access? Educational access और inclusivity को बढ़ाने के लिए। So what exactly is the name of the country जिसको $50 million का सपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक्सटेंड किया? What is the name of this country? It is Sri Lanka. Absolutely right. I can see in the chat box Fruity, Herschel, Gururaj, everybody has given the right answer. Well done my dear friends. बढ़ते हैं next question पर। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IAEA रिसेंटली इन्होंने एक MOU साइन किया टू प्राइमरीली सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसको ये सपोर्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया? तो 5 ऑप्शन है, बड़ी तसल्ली से इसको देखिए क्या है। पहला ऑप्शन, काउंटर न्यूक्लियर proliferation surveillance, energy decentralization for tribal areas, expansion of low carbon nuclear electricity in developing countries, research collaboration for quantum safe nuclear facilities, reduction in thermal based emission from coal plants। तो कौन सी चीज के लिए इसको लॉन्च किया गया? What is the major objective of coming up with this MOU between World Bank and IAEA? What is the right answer? The right answer is एक्सपेंशन ऑफ लो कार्बन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर लो कार्बन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपेंड करना है, राइट। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्री कंट्री बनने का टारगेट कब तक का है? कैन एनीबॉडी टेल मी द ईयर इन विच इंडिया इज बेसिकली टारगेट टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्री कंट्री? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर डेट?
What is that year? That year is 2070. 2070 is the right answer. So such kind of questions which are related to your back end important current affair part that can also be asked in the examination, right? I can see here on the screen. So Harshal, Gururaj, Mayank, Padmini, Tripti, everybody has given the right answer. Well done guys. Next question. फ्रेंच ओपन 2025. तो फ्रेंच ओपन 2025 को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने आपको बताई थी इन द सिटी 360 सीरीज सेशन. आई बिलीव आप सभी को वो याद होगा. सो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है किसने जीता है फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स टाइटल, राइट, और किसने यहां पर विमेन सिंगल्स टाइटल को जीता है. प्लीज क्विकली टेल मी हियर व्हाट इज द राइट आंसर. सो कार्लोस अल्कराज, इज इट द राइट आंसर? What is the right answer here to the question number 13? The right answer is option D, that is Carlos Alcaraz and Coco Gauff. That is the right answer. Okay. So आप देख सकते हैं guys, Carlos Alcaraz is the winner in this particular part, right? And the runner-up was Jannik Sinner. So Jannik Sinner was the runner-up and the winner was Carlos Alcaraz. अगर हम बात करते हैं women singles की, तो यहाँ पर Coco Gauff was the winner and she defeated Aryna Sabalenka in the finals, right? So please remember this part, it is a very important part guys. Okay, अगर हम बात करते हैं विंबलडन की, so दोस्तों अभी हमने फ्रेंच ओपन की बात की, अगर हम विंबलडन की बात करें, can anybody tell me who was the winner in the Wimbledon? I told you a very beautiful story about it. So I told you Carlos and Sinner became the winner, right? So Carlos defeated in the Wimbledon finals and Sinner become the winner in the Wimbledon finals. But अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो कहानी उल्टी हो जाती है. Why? Because Sinner, Jannik Sinner was the runner-up and Carlos was the winner, right? इस तरीके से चीजों को याद रखिए guys. It is very important कि हम चीजों को आसान बनाकर चलें. ठीक है, मुश्किल नहीं बनाना, एक खेल की तरह चीजों को आसान बनाएंगे. It will be really really easy for us to remember, right? So यहां पर याद रखिए फ्रेंच ओपन के अंदर कार्लोस जीते हैं, बट इन द विंबलडन कार्लोस वाज डिफीटेड इन द फाइनल्स, राइट, एंड द जैनिक सिनर वाज द विनर. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं विमेन सिंगल्स की, तो कोको गॉफ इज द विनर हियर एंड अराइना सबलेंका वाज द रनर अप. आई बिलीव आप सभी को ये चीजें याद रहेंगी. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल के ऊपर. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन ऑफ थाईलैंड हु वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025? तो मिस वर्ल्ड 2025 की दो इंपॉर्टेंट चीजें. इंपॉर्टेंट चीज है विनर और दूसरा द होस्ट. इस बार होस्ट किया इसे इंडिया ने, कहां पर होस्ट किया गया, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, एंड हु वाज द विनर. सो विनर और होस्ट दोनों ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? द नेम इज ओपल सुचेता, हु इज द विनर एंड इट वाज होस्टेड इन हैदराबाद. सो मिस वर्ल्ड 2025 वाज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद, और यहां पर एक्टर सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी कॉन्फर किया गया था. सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. तो मिस वर्ल्ड 2025 याद रखिए, ओपल सुचेता इज द नेम ऑफ द विनर, एंड व्हेन इट कम्स टू द होस्ट, इट वाज होस्टेड इन हैदराबाद. एंड हु वाज बीन गिवन, who was been conferred with the Miss World Humanitarian Award, that is actor Sonu Sood is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, $200 मिलियन डिफेंस क्रेडिट लाइन इंडिया ने कौन सी कंट्री के लिए पास किया है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर. व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन बी, दैट इज अंगोला. ऑप्शन बी अंगोला इज द राइट आंसर. इज इट द राइट आंसर गाइस? टू द क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आयुष निवेश सारथी पोर्टल. सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है, बट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? हियर द फोकस इज ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन. ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस एमओयू को साइन किया गया, विच हैज बीन साइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष along with Invest India. That is the right answer. Next question, Prime Minister Modi ji inaugurated two landmark railway bridges in Jammu and Kashmir, one being the world's highest railway arc bridge. So आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर दो नाम. सबसे पहला है उस ब्रिज का नाम क्या है, और दूसरा नाम है रिवर का जिसके ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, 359 मीटर्स अबव द रिवर है. ठीक है, क्या नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवर का नाम भी इंपॉर्टेंट है. दोनों ही डायमेंशन हमें याद करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज? इट इज चेनाब ब्रिज एंड इट हैज बीन
constructed over Anji Bridge. Sorry, this is the right part. Okay. So दोस्तों basically यहाँ पर there are two things. First thing is we are talking about the world's highest railway arch bridge and the other one is the India's first cable stayed rail bridge, right? So sorry from my part. So पहले क्वेश्चन का पार्ट है हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इज चेन्नई ब्रिज एंड द फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इज अंजे ब्रिज. ओके, सो नेम इज अंजे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय कोंकण रेलवेज एंड इट स्पैन्स द अंजे रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर. आई होप दिस इज क्लियर. और चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर. तो चेनाब रिवर के ऊपर बना है चेनाब ब्रिज और अंजी रिवर के ऊपर बना है अंजे ब्रिज, राइट. सो दैट्स हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड रिटेन दीज टू नेम्स. तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज और इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज. सो दीज आर द टू नेम्स दैट वी नीड टू रिमेंबर हियर. नेक्स्ट पार्ट, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज द उम्मीद पोर्टल, जिसको लॉन्च किया गया टू एनेबल रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज. आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल है दोस्तों वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है. विच मिनिस्ट्री इज द नोडल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ उम्मीद सेंट्रल पोर्टल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मिनिस्ट्री? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ Minority Affairs. That is the right answer. Okay, उम्मीद पोर्टल is basically working under the Ministry of Minority Affairs और जो भी चीजें हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम Minority Affairs मिनिस्ट्री के पास है. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई और ईसीबी ने रिसेंटली अनाउंस किया टेस्ट सीरीज दैट विल बी कॉल्ड द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी. दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज होती है पहले उसके अलग नाम थे, बट अब इसका नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है. और आप सभी ने देखा होगा रिसेंटली इंडिया और इंग्लैंड का जो फाइनल रिजल्ट था ऑफ द सीरीज वाज 2-2, राइट, एंड इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल सीरीज. बट व्हेन इट कम्स टू द ओल्डर नेम ऑफ दिस सीरीज, तो यह आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लियर नेम्स वाज यूज्ड फॉर दिस बायलैटरल सीरीज व्हेन इट वाज हेल्ड इन इंडिया. जब वो इंडिया में होती थी तो इसका क्या नाम होता था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सीरीज? सो इट इज ऑप्शन सी, दैट इज एंथनी डिमेलो ट्रॉफी. दैट इज द राइट आंसर. ओके, अगर ये इंग्लैंड में होती है सीरीज तो इट इज बीन कॉल्ड पटौदी ट्रॉफी, और अगर ये इंडिया में होती है इट वाज बीन कॉल्ड एंथनी डिमेलो ट्रॉफी. बट अब ये काफी पुराने प्लेयर्स हो चुके हैं, सो अभी इन्होंने अपडेट किया है इसका नाम, दैट इज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इकोनॉमिस्ट का नाम जिनको फुल टाइम चेयरमैन बनाया गया है टू द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? द नेम ऑफ द पर्सन इज एस महेंद्र देव. दैट इज द राइट आंसर. याद रखिए ईएसी के फुल टाइम चेयरमैन बने हैं एस महेंद्र देव. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025 जून 2025 में हमने कोमेमोरेट किया और आपको आइडेंटिफाई करना है इसकी थीम क्या थी. व्हाट इज द ग्लोबल थीम एंड द कैंपेन लॉन्च इन इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर ओकेजन. सो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एक इंपॉर्टेंट डे को कवर करते हैं साथ साथ उसकी थीम को कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है. एंड हियर व्हाट इज द थीम? द थीम इज लेट्स मूव, एंड लेट्स मूव इंडिया +1 इज द कैंपेन व्हिच वाज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया. ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जून 23 को सेलिब्रेट किया गया, राइट. लेट्स मूव इज द थीम ऑफ द डे और लेट्स मूव कैंपेन को 2023 में लॉन्च किया गया था और यहां पर लेट्स मूव इंडिया +1 कैंपेन इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है. ओके, दैट इज द राइट पार्ट. सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस पार्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इट इज इंडियाज पार्टिसिपेशन इन एक्सियम 4 मिशन. सो दोस्तों एक्सियम 4 मिशन बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर था रिसेंटली. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए तो आपने आज के सेशन में काफी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे. आई डोंट थिंक कि किसी को रिक्वायरमेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट. सो बेसिकली यहां पर पहला स्टेटमेंट है, हम फोकस करेंगे कीवर्ड्स के ऊपर. फर्स्ट स्टेटमेंट, शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. एक्सियम 4 मिशन लॉन्च यूजिंग द क्रू ड्रैगन कैप्सूल नेम्ड ग्रेस. Third statement, launch of Axiom 4 marked India's first human spaceflight mission since Kalpana Chawla's return from ISS in 2003. आपको आइडेंटिफाई करना है what is the right answer. Which of the following statements are correct here? That is what we need to identify. Let's see who will be giving me the right answer. Most of the people are saying to the question number 22. The right answer is option D. So Rover is saying option D is the right answer. Let's wait for others as well to
give their inputs about the right answer. So most of the people going with option D, but no guys, option A is the right answer. That is only statement 1 and 2 are right. अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की, इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इंडिया का जो लास्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था इट वाज बाय राकेश शर्मा इन 1984 एंड नॉट द कल्पना चावला इन 2003. ठीक है, so I hope this is clear. This is the reason that statement number 3 is incorrect here. Now I would like to ask you here, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही इंडिया इज एमिंग फॉर इट्स भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. Can anybody tell me by which year we are targeting to have the भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? Please tell me in the chat box. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफी बार आजकल न्यूज में रह रहा है ये दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द ईयर. दिस इज द ईयर बाय विच इंडिया इज टारगेटिंग टू क्रिएट इट्स ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दैट इज द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. जैसे हमारे जो इसरो के चेयरपर्सन है, कोई मुझे बता सकते हैं चेयरपर्सन का नाम? हु इज द प्रेजेंट इसरो चेयरपर्सन? Who is serving as a chairman at ISRO right now? What is the name of this person? Recently, he was also been awarded for his efforts. What is the name of this person? Dr. V. Narayanan. Dr. V. Narayanan is the right answer. And he is giving so many speeches nowadays, and he has basically announced this in all the speeches that basically India will be having its own Bharatiya Antariksh Station by 2035. 2035 is the right answer, right? This is the year by which we will be having our own international space station, that is Bharatiya Antariksh Station. Absolutely right. Moving ahead, the first ever direct US military strike on Iranian nuclear infrastructure, or what is the name of the operation under which the US has done this strike over Iranian nuclear infrastructure? What is the name of this operation? The name of the operation was Operation Midnight Hammer. That is the right answer. Moving ahead, तो टेस्ला की पहली रोबो टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया गया है कौन सी यूएस सिटी के अंदर यूजिंग इट्स मॉडल एसयूवी फ्लीट इन जून 2025. तो टेस्ला की पहली रोबो टैक्सी सर्विसेज कहां पर लॉन्च की गई हैं? इट हैज बीन लॉन्च्ड इन ऑस्टिन. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल बेंच ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू मोटो. तो दोस्तों लोकपाल का नया मोटो रिलीज किया गया. अगर लोकपाल का मोटो रिलीज किया जाएगा नया, पुराने चीज में कोई अपडेट होगा, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द न्यूली अडॉप्टेड मोटो ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज द न्यूली अनवील्ड अपडेटेड लोगो? दैट इज एम्पावर सिटीजंस एक्सपोज करप्शन. एम्पावर सिटीजंस एक्सपोज करप्शन इज द राइट आंसर. अगर हम बात करते हैं पुराने मोटो की, इट वॉज मा गृढ़ा कश्याश्वधनम. दैट इज द राइट पार्ट. दैट इज डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनीवन्स वेल्थ. दैट वॉज द ओल्ड लोगो एंड द ओल्ड मोटो, बट नाउ द न्यू मोटो इज एम्पावर सिटीजंस एक्सपोज करप्शन. राइट. सो हिंदी वाला पार्ट बहुत ही कम चांसेस है कि आएगा, बट यस प्लीज रिमेंबर दिस ओल्डर वन ऑल्सो. ओके, तो न्यूअर वन ओल्डर वन दोनों ही याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Next question, the first Indian writer to be honored with the Dostoevsky Star Award for preserving literary heritage. What is the name of this person? You are having 5 options. Please try to give me the right answer here. What is the name of this Indian writer? The first Indian writer to be awarded this award. The name is Javed Akhtar. Javed Akhtar is the right answer. Next question, the mutual fund company launched India's first Nifty Internet Exchange Traded Fund. What is the name of this company? The name of this company is Grow Mutual Fund. Next question, India's first electronic waste eco park has been proposed to be set up. So basically इस particular park को कहां पर बनाया जाएगा, right? And this will be launched in a PPP based model, that is public private partnership. What is the name of this place? It will be operated in Holombi Kala of North Delhi. तो इसको डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के ऊपर बनाया जाएगा इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इट विल बी ऑपरेटेड एंड इंस्टॉल्ड इन होलंबी कला ऑफ नॉर्थ दिल्ली. दैट इज द राइट आंसर. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क. इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क होलंबी कला नॉर्थ दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन ग्लोबल सीईओ ऑफ अ फेमस फ्रेंच लग्जरी ब्रांड जिन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से ऑनर किया गया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन?
So the name of this person is Leena Nair. Leena Nair is the right answer. ठीक है, it is been awarded by the monarch of the Commonwealth realms और ये third highest rank है in the order of the British Empire after the Knight Grand Cross or Dame Grand Cross of the most excellent order of the British Empire. Right? So इन दो awards के बाद तीसरा highest honor है that is the commander of the order of the British Empire और किसे दिया गया है ये award? It has been given to Leena Nair. That's it. Next part. So agreed road indigenization facility को inaugurate किया गया recently चेन्नई के अंदर और ये बनी है इंडिया की पहली एरोस्पेस first in India to receive dual DGCA certifications in both manufacturing and training. What is the name of this particular organization? इस organization का क्या नाम है जिसने पहली agreed road indigenization facility को launch किया है? That is Garud Aerospace. Garud Aerospace is the right answer. Next question, the report assessing impact of International Day of Yoga. तो International Day of Yoga हम बनाते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जून. आपको आइडेंटिफाई करना है that what exactly is the name of the report which has been released during the International Day of Yoga celebrations. What is the name? The name is योग प्रभाव रिपोर्ट. कि योगा को लॉन्च किया गया दोस्तों और इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया, बट इसका क्या इंपैक्ट हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा, इसीलिए प्रभाव रिपोर्ट को बनाया गया. ठीक है, और जो थीम है दैट वाज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ. राइट, और इस साल हम 10 इयर्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल योगा मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि 2014 के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को इंस्टीट्यूट किया गया था. दैट एवरी ईयर 21 जून विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. So that's it. That is the right part. Next question. So which state was felicitated as a top performer in the wind capacity? So recently Global Wind Day conference हुई थी और उस दौरान एक particular state को felicitate किया गया for being the top performer in wind capacity. What is the name of this particular state? The name of the state is Karnataka. Option D, Karnataka is the right answer. Absolutely right, Herschel. You have given the right answer. Next question. वो कौन सी कंट्री है जिसने जापान को ओवरटुक किया टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप नेट फॉरेन एसेट होल्डर? और ये माइलस्टोन इसने पहली बार अचीव किया है इन द 34 ईयर सिंस 1991. तो 1991 के बाद पहली बार इस कंट्री ने इस अचीवमेंट को हासिल किया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री विच ओवरटुक जापान? दैट इज जर्मनी. जर्मनी इज द राइट आंसर. राइट, सो पहली बार जर्मनी ने सिंस 1991 इस कंट्री को surpass किया है. That's why it is there in the news articles. Next question, the first Grand Slam title as a pair in the women's doubles category at the French Open. So French Open में वो कौन सा women pair है जिसने की ये जीता है French Open? What is the right answer here? Please tell me here. Women's doubles category के अंदर who was the winner? It was Jasmine Paolini and Sara Irani. That is the right answer. So Jasmine Paolini and Sara Irani won their first Grand Slam title as the pair in women's doubles. अगर हम बात करते हैं who was the winner of the French Open in the women's singles, तो women's singles में who was the winner? Please tell me in the chat box. So in the women's singles who was the winner? The winner was Coco Gauff. Right, and if we talk about the men's category, in the men's singles title who was the winner and who was the runner up? The runner up was Jannik Sinner. And if we talk about the winner was Carlos Alcaraz. Right, और अगर हम बात करते हैं women's category के अंदर runner up की, who was the runner up here? Here the runner up was Aryna Sabalenka. तो इससे हमने इसको भी रिवाइज कर लिया. In the French Open in the women's category Coco Gauff was the winner and the runner-up was Aryna Sabalenka. अगर हम बात करते हैं men's category की, Carlos Alcaraz was the winner and the person who was the runner-up was Jannik Sinner. Right? और अगर हम बात करेंगे विंबलडन की, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो विंबलडन के अंदर हु वाज द विनर? यानिक सिनर इज द विनर एंड द पर्सन हु वाज द रनर अप इन द मेंस कैटेगरी वाज he was Carlos Alcaraz. Right, absolutely. I can see in the chat box all the people are able to give me the answer of these questions without having any option. That is the beauty, that yes, you guys are able to retain all this information from examination point of view. Well done guys. बढ़ते next question पे. So try and launch a pilot project in partnership with the RBI and banks to digitally verify the user permission for commercial communication. Commercial communication के लिए user के permission
का पायलट प्रोजेक्ट रिसेंटली ट्राई ने लॉन्च किया है विद आरबीआई एंड द बैंक. सो यू हैव टू टेल मी हियर, यहां पर जो एक्रोनिम CRF है, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? द CRF स्टैंड्स फॉर द कंसेंट रजिस्ट्रेशन फंक्शन. तो कंसेंट रजिस्ट्रेशन फंक्शन इज द CRF. ओके, सो यू कैन सी हियर दैट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को डायरेक्ट किया गया कि वो ऑपरेशनलाइज करें CRF को टू वैलिडेट एक्सप्लिसिट कंज्यूमर कंसेंट फॉर कमर्शियल मैसेजेस. कमर्शियल मैसेजेस के लिए एक्सप्लिसिटली हमें हमारे यूजर की कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही ये मैसेजेस उनको भेजे जा सकते हैं. सो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द CRF. लेट मी टेल यू हियर, इन द प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द सच क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड इन द RBI ग्रेड बी ऑफिसर फेज 1 एग्जामिनेशन, राइट, जहां पर ट्राई ने कुछ लॉन्च किया था और वहां पर सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया था उस पर्टिकुलर टर्म का. दैट्स वाई दिस क्वेश्चन रियली इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और काफी इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी was conferred with the dash honor, a highest civilian honor of Cyprus. What is the name? We all know that in the recent past we have seen so many awards being given to Prime Minister Modi ji. Wherever he is going, he is receiving the highest honors, right? What is the name of the honor which was being given by Cyprus? It was the Grand Cross of the Order of Makarios III. That is the right answer. और ये जो अवार्ड है ये उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पर है. ठीक है, जो कंट्री का पहला प्रेसिडेंट था, साइप्रस के पहले प्रेसिडेंट के नाम पर इस अवार्ड को बनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट पेट्रोल वेसल का आपको नाम बताना है विच बिकेम द 5th इन इट्स क्लास, जिसको रिसेंटली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया फॉर द इंडियन कोस्ट. तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया ये फास्ट पेट्रोल वेसल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेसल? इट इज अचल. ऑप्शन ए अचल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सर्विस लेवल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को रिसेंटली कंडक्ट किया गया था. आपको आइडेंटिफाई करना है क्या नाम है इस एक्सरसाइज का. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? सो इट इज साइबर सुरक्षा. दैट इज द राइट आंसर. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिफेंस साइबर एजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर वुमेन टू हेड यूनाइटेड किंगडम्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6. सो जिन लोगों ने जेम्स बॉन्ड मूवी को देखा उन्होंने देखा होगा MI6 का नाम उन्होंने काफी बार सुना होगा, राइट. सो हम उसी ऑर्गेनाइजेशन, उस इंटेलिजेंस ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं विच इज ऑफ यूनाइटेड किंगडम. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? सो शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स एंटायर हिस्ट्री. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? दैट इज ब्लेज मैथ्रेवेली इज राइट आंसर. एंड शी विल बी सक्सेडिंग रिचर्ड मूरे. तो सर रिचर्ड मूरे को रिप्लेस करेंगे ब्लेज मैथ्रेवेली. दैट इज द राइट आंसर. Next question, joint military exercise conducted between India and French armies. What is the name of this exercise? इंडिया और फ्रेंच आर्मीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम आपको बताना है. What is it? It is option B, that is शक्ति. शक्ति is the right answer. Okay? So यहां पर उनकी जो हमारी एयर एक्सरसाइजेज है, नेवल एक्सरसाइजेज है, उनका नाम भी दिया गया है. Can anybody tell me the name? इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम है और साथ ही साथ एयर एक्सरसाइज का क्या नाम है जहां पर एयर फोर्सेस ऑफ द बोथ कंट्रीज पार्टिसिपेट टुगेदर? व्हाट इज द नेम? सो बेसिकली दोनों ही नाम आपको दिए गए हैं दोस्तों ऑन द स्क्रीन. एब्सोल्युटली राइट. आई कैन सी इन द चैट बॉक्स वरुण एंड गरुड़ा हैज बीन मेंशन्ड बाय सो मेनी पीपल हियर. एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल कंपनी एस्टैब्लिश इंडिया लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल. इसको कहां पर बनाया गया, कौन सी कंपनी ने बनाया? तो इट इज मानेसर हरियाणा वेयर इट इज बीन लोकेटेड. बट विच कंपनी हैज क्रिएटेड इट? इट इज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकार सुरक्षा इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन का नाम आपको बताना है विच हैज लॉन्च्ड सहकार सुरक्षा, जो कि इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है. इसे किसने लॉन्च किया गया? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. दैट इज द राइट आंसर. सो सहकार सुरक्षा इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है and it is dedicated to cooperative banking sectors. Okay, next question, DPIIT एक MOU साइन करता है अंडर द भारत प्रोजेक्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी मीडिया कंपनी है जिसके साथ DPIIT ने कोलैबोरेट किया है इस इनिशिएटिव के लिए. फॉर दिस इनिशिएटिव DPIIT हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी? इट हैज बेसिकली collaborated with Your Story Media Private Limited. So DPIIT has signed this MOU with one of the media companies. The name of the media company is Your Story Media Private Limited. Next question, Professor Anant Chandra Kashan, an Indian American engineer,
was appointed as the provost, the chief academic and budget officer. और ये जो रैंक है गाइस, ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर है, आपको आइडेंटिफाई करना उस यूनिवर्सिटी का नाम. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी? द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज MIT. MIT के अंदर प्रोवोस्ट की पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है. व्हाट इज द नेम? प्रोफेसर अनंत चंद्र कृष्ण. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने इनॉग्रेट किया पहला एशिया पैसिफिक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया के अंदर. और जब ऐसा कोई पहला सेंटर बनाया जाएगा, कहां बनाया जाएगा, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. And when it is being created in India, then it becomes more important from exam point of view. So the name of this particular place is Hyderabad. Hyderabad is the right answer. इससे पहले दोस्तों हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज को कवर किया था. हमने कवर किया था कि हैदराबाद के अंदर मिस वर्ल्ड 2025 इवेंट भी हुआ. Can anybody tell me what is the name of that actor who was been given the Miss World Humanitarian Award? So Miss World Humanitarian Award was been given to which actor? It was been given to Sonu Sood. Okay, absolutely right. Next question, इंडिया ने एक evacuation mission conduct किया to bring back Indian nationals from Iran and Israel. तो we all know ईरान और इजराइल के बीच में कुछ tough situation थी, right? और उस टाइम पर इंडियंस को evacuate किया गया और there was an operation which was been launched by India. What was that evacuation operation which was been launched by India to evacuate Indians from there? It is Operation Sindhu. Operation Sindhu is the right answer. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बना है पहला इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन म्युनिसिपल पॉल्स. अब आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी यूरोपियन कंट्री थी जो एक ओनली अदर कंट्री है टू हैव इंप्लीमेंटेड अ सिमिलर ई वोटिंग सिस्टम. तो बिहार ने ई वोटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसने इस सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है. व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ दैट इज एस्टोनिया. Estonia is the right answer. Again, I can see here in the chat box, Gururaj, Padmini, Fruity, Tripti, Harshal. Everybody has given the right answer. Well done, my dear friends. Let's move ahead to the next question. Indian company partnered with Council of Europe Development Bank, and the aim of it was to modernize reconciliation operations using automation and artificial intelligence. What is the name of this company? The name of the company is Tata Consultancy Services. TCS is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशन फिल्म देसी ऊ को ज्यूरी अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट कमीशन फिल्म एट द NXC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल. यू हैव टू टेल मी हियर हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस अक्लेम्ड मूवी. सो देसी ऊ मूवी के डायरेक्टर का क्या नाम है? सो जब भी कोई मूवी कोई अवार्ड जीतती है तो उसके डायरेक्टर का नाम बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट? सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? इट इज सुरेश एरियत. सुरेश एरियत इज द राइट आंसर. और अभी दोस्तों हाल ही में हमने देखा कि National Film Awards have been given for year 2023. Right? Can anybody tell me who has won the Best Actor Award? Best Actor Award किसको मिला in the National Film Awards 2023? Best Actor Award was being given to which personality? We have just covered it in the yesterday's session, right? It is been won by Shah Rukh Khan, right? And Vikrant Massey for 12th Fail. अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस की, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड हैज बीन गिवन टू रानी मुखर्जी. लेट मी टेल यू हियर, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान का ये अब तक का पहला नेशनल अवार्ड है, राइट? एब्सोल्युटली आई कैन सी ऑल द पीपल आर एबल टू गिव मी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो दैट शोज बहुत सारे मूवी लवर्स है एंड आई वुड से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल अवेयर है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम. दैट इज रियली अ ग्रेट पार्ट. ओके, सो यहां पर इसको याद करना बहुत ही ईजी है. अगर हम बेस्ट एक्टर्स की बात करते हैं दोस्तों, जस्ट याद रखिए SRM, शाहरुख खान एंड विक्रांत मसी आर द बेस्ट एक्टर्स, राइट? एंड बेस्ट एक्ट्रेस इज रानी मुखर्जी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने अपना पहला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर लॉन्च किया है फॉर एनहांसिंग डिजीज सर्वेलेंस एंड डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज. आपको बताना इस HPC क्लस्टर का क्या नाम है. व्हाट इज द नेम ऑफ द HPC क्लस्टर? तो द नेम ऑफ द क्लस्टर इज नक्षत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 5-year MOU साइन किया है इसरो के SHAR के साथ सो दैट दे कैन एनहांस सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस यूजिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी. स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को आप बेहतर बना सकते हैं. इसलिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है? इट हैज बीन साइंड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट.
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसरो के साथ ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ एमओयू साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल। इंडिया का पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने के लिए किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ये एमओयू साइन किया है? इट इज गार्डन रिच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स, राइट? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025 इस साल कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, माय डियर फ्रेंड्स, दैट वी सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 5th of June. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री विच वाज द होस्ट कंट्री? तो जब भी इंपॉर्टेंट डेज आएगा, इंपॉर्टेंट डेज, तो हमें याद करना है व्हाट इज द डेट ऑन विच दैट पर्टिकुलर डे इज बीन सेलिब्रेटेड, व्हाट इज द थीम एंड हु वाज द होस्ट कंट्री। अगर कोई होस्ट प्लेस है तो ये भी हमें याद करना है। So this year it was the Republic of Korea who was the host for the World Environment Day. The day is basically celebrated every year on June 5. Beat plastic pollution is the theme for year 2025. So that's what we need to understand here and retain here. Next question, Union Public Service Day observe किया गया था जून में। आपको बताना है किस थीम के अंडर इसे observe किया गया। What is the theme for Union Public Service Day? What is the theme for this day? The theme for the day is 5 years to 2030, accelerating public service delivery for a sustainable future. My dear friends, we all know that we are having some sustainable development goals that we want to achieve by 2030. And how many goals are there? There are 17 sustainable development goals. और इसीलिए United Nations Public Service Day celebrate किया गया recently on June 23, जहां पर हमने देखा basically कि हम और किस थीम के अंदर इसको बनाना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं 5 years to 2030, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2029 टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज मिशन। तो एक ऑर्बिटल मिशन TSI लॉन्च करने वाला है, उसके लिए किस एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन किया गया है? लाइक वी ऑल नो दैट Axiom 4 मिशन वाज बेसिकली in the Axiom 4 mission who was the Indian astronaut Shubhanshu Shukla, right? So similarly TSI मिशन के लिए किस पर्सन को यहां पर सिलेक्ट किया गया है? That is दंगेती जानवी is the right answer, right? तो TSI मिशन जिसको हम अर्थ लूप ऑर्बिटल क्रूज के नाम से भी जानते हैं, कमर्शियल लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट है and it will be a 5-hour orbital journey covering 2 complete orbits around Earth at an altitude of 300 kilometers. और यहां पर इंडियन दंगेती जानवी is the person who has been selected, so please remember the name of this person, it can be asked in the exam. Next question, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड बुक के ऑथर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज ऑथर्ड दिस बुक? इट इज प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ IIT खड़गपुर। तो इन्हें TWS अवार्ड दिया गया है बाय द यूनेस्को। अब कौन सी फील्ड के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया? सी गाइस, व्हेनेवर अ पर्सन is basically receiving an award, what is the name of the person, what is the name of the award, why he has been given this award, and in which field he has been given this award, all these aspects and the dimensions becomes important. और यहां पर आपको दिया गया प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जिनको अवार्ड दिया गया, बट किस फील्ड के लिए दिया गया? he has been given this award for engineering and computer sciences, option C. Next question, the third Indian tennis player to receive Billie Jean King Hurt Award. Billie Jean King Hurt Award has been given to one of the tennis player of India. What is the name of this player? So this personality has become the third player. So the name of the person is Shrivali Bhami Dipati. That is the right answer, right? So please remember the name. Billie Jean King Cup Hurt Award किसको दिया गया? We have already discussed, right? इससे पहले ये अवार्ड दोस्तों सानिया मिर्जा को भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनर किया किस इंडियन कंपनी के साथ to deploy Azure Artificial Intelligence Services on the Shakti Cloud? तो इंडिया AI मिशन के अंडर शक्ति क्लाउड पर इन सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए एक MOU साइन किया गया बाय द माइक्रोसॉफ्ट। विद विच ऑर्गेनाइजेशन इट हैज बीन डन? इट हैज बीन डन विद योटो डाटा सर्विसेज। योटो डाटा सर्विसेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स and RIS to accelerate agriculture innovation. तो एग्रीकल्चर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए थ्रू द साउथ साउथ कोऑपरेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड? That is what we need to identify here. So what is the name of this platform? The name of the platform is ECOSOC Center of Excellence for South South Cooperation in Agriculture. Option D is the right answer. So again I can see in the chat box so many people have given option D as the right answer.
Absolutely right, guys. Option D is the right answer. Well done. So this shows that yes, all the people are giving me the right answers here. Well done, guys. Tripti, Rover, Padmini, Gururaj, Fruity, you guys are rocking today. Next question. Which company received CCI approval to acquire 9.99% stakes in IDFC First Bank? We have to identify the name of the company जिसको approval दिया है by the CCI Competition Commission of India कि वो 9.99% stake यहाँ पर परचेज कर सकती है, एक्वायर कर सकती है. व्हाट इज द नेम? द नेम इज करंट सी इन्वेस्टमेंट बीवी. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हु वाज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट? शी इज एनालेना बेरबॉक. दैट इज द राइट आंसर. यूएनजीए की बात करें, सो द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ था. न्यूयॉर्क सिटी इज द हेडक्वार्टर. 193 मेंबर्स आर देयर. So United Nations General Assembly, if it is in the news, it is very important to cover some static portion also about it. Okay, absolutely right. I can see in the chat box most of the people have given me the right answer. Annalena Baerbock is the right answer. Well done. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लिस्ट किया है एनएससी के ऊपर. आपको बताना है इस बॉन्ड की वैल्यू क्या है. व्हाई वी आर डिस्कसिंग द म्युनिसिपल बॉन्ड्स? There is a certain reason to it. I will be discussing that also here. Okay. So municipal bonds को launch किया गया. You have to identify the name of the what is the value of the bond. The value of the bond is 25 crore rupees, right? So this is the right part. अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, so गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने म्युनिसिपल बॉन्ड को लिस्ट कराया है at a coupon rate of 7.65%. Why it was in the news? Because Gandhinagar is now the 5th municipal corporation in Gujarat after Ahmedabad, Surat, Vadodara and Rajkot. और इसके साथ साथ ये youngest वो सिटी है जिसने इसको बेसिकली लॉन्च किया है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. So it is the youngest urban local body in the country to issue a municipal bond. So that is why it is important to be remembered from examination point of view. Please remember the name Gandhinagar Municipal Corporation Bond. Next question. उस फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी का नाम आपको बताना है और डिफेंस कंपनी का जिसने बेसिकली अनाउंस किया है that it will be establishing first ever maintenance, repair and overhaul facility for the Rafale M88 engines outside France. तो फ्रांस के बाद एक यही प्लेस है जहां पर इन्हें रिपेयर किया जा सकेगा. M88 इंजन्स की यहां बात हो रही है. What is the name? What is the name of this particular company? It is Safran is the right answer. Absolutely right. So Harshal has given the right answer to this particular question. Gururaj, Tripti, Rover. Absolutely right, guys. Well done. Next question. ऋषभ पंत ऐसे पहले इंडियन बने हैं विकेट कीपर टू स्कोर सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच. आपको आइडेंटिफाई करना है किस कंट्री के अगेंस्ट इन्होंने इस पर्टिकुलर अचीवमेंट को हासिल किया. What is the name of that country against which he has created this record? The name of that particular country is England. और अभी हमने रिसेंटली बात की थी कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो बायलैटरल सीरीज होती है उसका नाम चेंज किया गया. कैन एनीबडी टेल मी द न्यू नेम? प्लीज टेल मी द न्यू नेम ऑफ द सीरीज दैट इज बेसिकली बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज. क्या नाम है इसका? तो पहले जब ये सीरीज अगर इंग्लैंड में होती थी इट वॉज बीन कॉल्ड पटौदी ट्रॉफी, और अगर इंडिया में होती तो इट वॉज एंथनी डी मेलो ट्रॉफी. बट अब इसका नाम क्या रखा गया है? दैट इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई हियर. एब्सोल्युटली राइट, इट इज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को रिसेंटली अनाउंस किया गया. वेयर इट विल बी हैपन? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों हर साल किए जाते हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है that where exactly they will be taking place, which place will be hosting this Khelo India University Games 2025 edition. So they will be hosted by Rajasthan. Absolutely right. Next question. So recently it has been announced and approved the establishment of International Potato Center. International Potato Center बनाया जाएगा at सिंगना आगरा उत्तर प्रदेश. आपको आइडेंटिफाई करना है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है. तो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां बनेगा? आगरा के अंदर बनेगा. बट इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है? इट इज ऑर्गेनाइजेशन गाइस. सो बेसिकली इट इज लोकेटेड इन लीमा, पेरू. दैट इज द राइट आंसर. ओके, सो अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर फॉर साउथ एशिया रीजनल सेंटर, इट विल बी क्रिएटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश.
अगर हम बात करें इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की 1971 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर है इसका पेरू लिमा के अंदर। ओके, दैट इज द राइट आंसर। So basically it focuses on potatoes, sweet potatoes and Andean roots and tubers, जिनके ऊपर फोकस करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लीमा, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेमोरेटिव पिलर ऑनरिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन एंड अफ्रीकन सोल्जर्स। रिसेंटली इस पिलर को अनवील किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री वेयर इट वाज अनवील्ड? दैट इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई हियर। व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ द कंट्री इज कीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलखान फॉसिल पार्क रिसेंटली इसे यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंडियन स्टेट वेयर इट इज लोकेटेड। वी आर टॉकिंग अबाउट सलखान फॉसिल पार्क। इट इज लोकेटेड इन ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आगरा के अंदर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनाया जाएगा, राइट। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इट। और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है? इट इज इन लीमा, पेरू। जस्ट नाउ अभी हमने इसको कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रेटिंग वीवी कुमार, ये कॉमेमोरेटिव बुक है जिसको रिसेंटली रिलीज किया गया था फॉर द लेजेंडरी स्पिनर वीवी कुमार। आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द पर्सन्स नेम जिन्होंने कंपाइल किया है इस पर्टिकुलर बुक को। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन? इट इज प्रताप रामचंद। दैट इज द राइट आंसर, जिन्होंने इस बुक को कंपाइल किया है। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग 20,000 कॉन्टिन्यूअस सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने का एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड इंडियन ने बनाया है और इन्होंने 20,000 कॉन्टिन्यूअस सूर्य नमस्कार किए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है इनका नाम। पर्सन नेम इज संदीप आर्य जांगड़ा। दैट इज द राइट आंसर। तो 36 आवर्स एंड 21 मिनट्स के अंदर इन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया 22nd एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एक्सरसाइज है ओरिजिनली एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन द यूएसए एंड मंगोलिया आर्म्ड फोर्सेस, और किस ईयर के अंदर इसको लॉन्च किया गया। पहला एडिशन इस एक्सरसाइज का यूएसए और मंगोलिया के बीच में कौन से ईयर के अंदर हुआ और कब इसका ट्रांजिशन हुआ इनटू मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। तो दोस्तों वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, जहां पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये एक्सरसाइज को बेसिकली लॉन्च किया गया था 2003 के अंदर, और 2006 के अंदर इट वाज कन्वर्टेड इनटू मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। तो पहले बायलैटरल एक्सरसाइज थी, अब इसे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ इनिशिएटिव टू असाइन अ जियोटैग 13 डिजिट अल्फान्यूमेरिक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी। तो हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी दी जाएगी। सो बेसिकली वी विल बी डूइंग द मैपिंग ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। So कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दैट दे विल बी डूइंग दिस? सो दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस जिसने सरपास किया है मुंबई को टू बिकम द मेट्रोपॉलिटन रीजन वेयर हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्री रेंजिंग लेपर्ड्स आर बेसिकली देयर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? सो मुंबई को पीछे छोड़ने वाली इस जगह का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर, जो इंडिया की लेपर्ड कैपिटल बन चुकी है with the estimated 80 to 85 wild leopards overtaking Mumbai. So please remember, बेंगलुरु के पास अब ज्यादा नंबर ऑफ leopards है as compared to मुंबई। ओके, और बनेरघट्टा नेशनल पार्क आपका बेंगलुरु के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडेक्स विच इज अ फंड ट्रैकिंग BSE 1000 total return index. You have to tell me here what is the name of this fund. The name of this fund is मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। तो जब भी ऐसी कोई चीज पहली बार होती है दोस्तों, इन द फाइनेंस पार्ट आल्सो वी नीड टू कवर दैट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so now guys, moving ahead, India is announced as the host for the 12th edition of World Para Athletic Championships. एंड आपको आइडेंटिफाई करना है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको अनाउंस किया गया है। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस चैंपियनशिप विच विल बी होस्टेड बाय इंडिया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? इट इज कंगना रनौत। कंगना रनौत इज द राइट आंसर। नीरज चोपड़ा है सिक्योर्ड हिज फर्स्ट डायमंड लीग टाइटल इन द 2 years। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डायमंड लीग थी कहां हुई थी। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ दिस डायमंड लीग वेयर इट टुक प्लेस, वेयर नीरज चोपड़ा हैज वन द इवेंट? द नेम इज पेरिस। Next question, world's first HIV prevention shot which requires only 2 doses a year has been approved. इस ड्रग का क्या नाम है?
वर्ल्ड का पहला HIV प्रिवेंशन शॉट है दोस्तों ये, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। तो कभी भी कोई चीज पहली बार होगी, वी नीड टू रिटेन इट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस ड्रग, इट इज lenacapavir, that is the right answer. Lenacapavir is the right answer. Okay, next question is on International Day of Yoga. हम already cover कर चुके हैं International Day of Yoga that we celebrate every year on 21st of June. But अब आपके पास एक statement based question है और आपको go through करना है इन statements को, you need to identify the right answer. So आपको consider करना है statements को, identify the right answer. पहला statement is on the theme, that is yoga for one earth, one health is the theme. सेकेंड स्टेटमेंट, इस साल इसको होस्ट कहां किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज बीन होस्टेड इन कर्नाटका, बेंगलुरु। थर्ड स्टेटमेंट, राजस्थान रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस फॉर योगा संगम इवेंट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। लेट मी सी हु विल बी गिविंग मी द राइट आंसर हियर। तो 3 स्टेटमेंट है आपके पास, आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द राइट आंसर हियर। So here, yes, most of the people are able to give me the right answer. That is option B, only 1 and 3. Can anybody tell me why the statement 2 is incorrect? Yes, option B is the right answer. Statement 2 is the incorrect one. Absolutely right, Guru Raj. It is the Vizag, which is the host for the International Day of Yoga this year. Right? Similarly, guys, हमने बात किया host country की. Host country for the World Environment Day that we celebrate every year on 5th of June. So, which was the host country of World Environment Day? Please tell me here. The host country for Environment Day was Republic of Korea. Right? That is the right answer. Next question. So, the next question is the first Telecom Technology Development Fund Symposium. ये recently हुआ था, conduct किया गया था for indigenous telecom research. You need to identify statements regarding the TTDF initiative. Okay? तो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला TTDF सिंपोजियम था, इट वाज होस्टेड एट IIT मद्रास थ्रू कोलैबोरेशन विद DOT एंड TCOE. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जहां पर हमने सारे कीवर्ड्स को मार्क किया है. सेकंड स्टेटमेंट, डिजिटल भारत निधि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इसके लिए, TTDF के लिए. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑन द वेरी बेसिक डिटेल ऑफ दिस स्कीम, दैट इज TTDF स्कीम को ओरिजिनली 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था. Now you have to identify which of the following statements are correct here. Let's see who will be giving me the right answer. So question number 80. There are people who are saying that we will be skipping this question. So to the question number 80, what is the right answer? Option A. People are saying option A is the right answer. Absolutely right. But what is the incorrect part in the statement 3? Statement 3, it says 2020 के अंदर इसको launch किया गया. So it is not the 2020, it is 2022 when it was being launched. So TTDF scheme was being launched in 2022 by Department of Telecommunication. Implement इसे डिजिटल भारत निधि करती है. ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल है, में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडिया रिलेटेड इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें बढ़ावा देना है इन द नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज. दैट्स व्हाई इट हैज बीन लॉन्च्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोमिनेंट इंडियन पर्सनालिटी जिनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मालदीव्स के लिए. So what is the name of the prominent Indian personality? So she is Katrina Kaif. Option B, Katrina Kaif is the right answer. Next question, International Atomic Energy Agency ने Convex 3 एक्सरसाइज को लॉन्च किया in collaboration with which country? कौन सी कंट्री के साथ इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया by International Atomic Energy Agency? What is the name of this country? It is Romania, जिसके साथ इस Convex एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर. तो JCB प्राइज फॉर लिटरेचर को 2025 में डिसकंटिन्यू किया गया है. आपको आइडेंटिफाई करना है हु वाज द लास्ट विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइज. तो लास्ट विनर कौन था इस प्राइज का? तो दिस प्राइज वाज बीन वन बाय उपमन्यु चटर्जी फॉर लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ. सो उपमन्यु चटर्जी इज द राइट आंसर, जिनको ये लास्ट टाइम अवार्ड दिया गया था. Next, the Indian company became the first to surpass 15 gigawatt of installed renewable energy capacity. What is the name of this Indian company? The name of the Indian company is Adani Green Energy Limited, जिसने पहली बार सरपास किया 15 gigawatt. Next question, the former G20 शेयरपैन नीति आयोग CEO अमिताभ कांत, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है. दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्हें एज अ सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया गया है. सो ही विल बी नाउ वर्किंग एज अ सीनियर एडवाइजर टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड. दैट इज अ कैनेडा बेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक वर्स 2025 रिसेंटली हुआ था. इसे ऑर्गेनाइज किया गया विद द
which of the following ministries to promote indigenous technology development? Indigenous technology development को promote करने के लिए कौन से ministry ने tech वर्ष को organize किया? That is what we need to identify. So here, what is the right answer? It is option C, Ministry of Electronics and Information Technology. Next question, you have to tell me the name of the city जिसको headquarter बताया गया है for the newly inaugurated National Turmeric Board. National Turmeric Board के headquarter कहां पर होगा? That is what we need to identify here. The headquarter will be in Nizamabad. That is the right answer. Nizamabad in Telangana designated as headquarter for National Turmeric Board. 22nd National Award for E-Governance was conferred with a total of dash gold awards. तो कितने गोल्ड अवार्ड्स दिए गए थे एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिस ईयर? सो देयर वर टोटल 10 अवार्ड्स व्हिच वर बीन गिवन. गोल्ड अवार्ड्स मिले थे 10. तो आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत को इंक्लूड किया गया है ग्रास रूट लेवल डिजिटल इनोवेशंस के लिए इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. यहां पर गोल्ड अवार्ड दिया गया रोहिणी ग्राम पंचायत को जो कि महाराष्ट्र से है. सिल्वर अवार्ड वेस्ट मजलिस ग्राम पंचायत ऑफ त्रिपुरा. यूरी अवार्ड हैज बीन गिवन टू पलसाना ग्राम पंचायत ऑफ सूरत एंड सुकती ग्राम पंचायत ऑफ उड़ीसा. So these are the award winners. इस साल 10 गोल्ड अवार्ड्स दिए गए हैं फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिस्टी कोवेंट्री फ्रॉम जिम्बाब्वे बिकेम द फर्स्ट वुमेन. सो ये किसको लीड कर रही हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी या काउंसिल जिसको लीड करेंगी? क्रिस्टी कोवेंट्री ऑफ जिम्बाब्वे. द नेम ऑफ द कमिटी इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड शी विल बी सक्सीडिंग द थॉमस बैक. थॉमस बैक को सक्सीड करेंगी क्रिस्टी कोवेंट्री. कहां से हैं? जिम्बाब्वे से हैं. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1894, हेडक्वार्टर इन लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड. ओके, दैट इज द राइट आंसर. सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को हेड करने वाली ये पहली महिला हैं. ओके, इसी तरीके से दोस्तों हमने कवर किया MI6. कैन एनीबडी टेल मी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ MI6? MI6 की हेड किसे बनाया गया है? In the entire history of the MI6, we have never seen a women head. You have to tell me here the name of this person. The name of the person is Blaiswell Matrivelli. That is the right answer. Next question. आपको आइडेंटिफाई करना उस पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम जिसने which has become the first to waive minimum balance penalty. तो जो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आप दोस्तों देखते हैं कि एक मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना होता है, तो उसके ऊपर से पूरी की पूरी पेनल्टी को ही वेव ऑफ कर दिया गया है बाय दैट बैंक. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैंक? इट इज कैनरा बैंक. एब्सोल्युटली राइट. कैनरा बैंक इज द राइट आंसर एंड आई कैन सी इन द चैट बॉक्स सो मेनी पीपल हैव गिवन मी द राइट आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो. वेल डन गाइस. सो दिस शोज दैट यस, आप सिर्फ सेशन अटेंड नहीं कर रहे बल्कि आप हर एक चीज को अच्छे से याद भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू. दैट शोज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो फर्स्ट प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री टू विन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड. 2 डिफरेंट आईपीएल फाइनल्स के अंदर मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाला वो प्लेयर कौन है? द पर्सन's नेम इज कृणाल पांड्या. कृणाल पांड्या इज द राइट आंसर. अगर हम बात करें विनर की, हु वाज व्हिच टीम वाज द विनर ऑफ आईपीएल 2025? इट वाज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया ने अपना पहला एआई पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहां पर लॉन्च किया है? ट्रैफिक AI powered traffic management system, it has been launched at Dwarka Expressway. Option D. Next question. Which of the following organization has officially registered with the Reserve Bank of India as India's first dedicated maritime sector non-banking financial company? काफी important question है. Maritime sector की पहली NBFC जिसको RBI के साथ रजिस्टर कराया गया, what is the name? It is सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, और ये इट हैज बीन कम अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. सो इसको रजिस्टर किया गया विद द RBI एंड NBFC. प्लीज रिमेंबर द नेम सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. दैट इज द राइट आंसर. पुराना नाम भी दिया गया है इसका. सो सारी डिटेल्स आपको क्लियर दी गई हैं. प्लीज एंश्योर दैट यू आर रीडिंग इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू हैव टू टेल मी द नेम व्हिच हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड एज द फर्स्ट fast petrol vessel under the 8 FPV project at Goa Shipyard Limited. What is the name of this vessel? The name of the vessel is Adamya. Adamya is the right answer. Okay, so now my dear friends, we are moving to the last question of the today's session. So Directorate of Revenue Intelligence ने एक operation launch किया to curb the illegal import of Pakistani origin goods routed through third countries.
तो किसी तीसरी कंट्री से पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया के अंदर लेके आने का काम, सो इस ऑपरेशन के अंडर इससे रोका गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन? प्लीज ट्राई टू टेल मी हियर द राइट आंसर। डीआरआई का लॉन्च किया गया ऑपरेशन, व्हाट इज द नेम? द नेम इज Operation Deep Manifest. Operation Deep Manifest is the right answer. It has been launched by DRI, which functions under the Ministry of Finance. Okay, I hope this is clear. So that was the last question of the today's session, guys. I believe कि आप सभी ने आज के सेशन को काफी एंजॉय किया है, और अब काफी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होगा कि सर कहाँ मिलेगा PDF? Where exactly we will be getting the PDF of the session? So guys, you will be able to download the PDF from the Telegram channel, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, राइट? So from the description you can click on the Telegram channel link, you can join the Telegram channel, and within 24 hours you will be getting the PDF of this particular session. Now my dear friend, before concluding the session, again I would like to end here this session with a very important announcement. So guys, काफी students जो थे, जो last time जब हमने discounts दिए थे, तो they were not able to make to the फाइनल पार्ट की वो उस कोर्सेज को परचेज नहीं कर पाए। सो एक मौका एक और हमने फ्रॉम द EduTap आप सभी को दिया है, एंड वी हैव अगेन कम अप विद द नेवर बिफोर ऑफर वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू अप टू 80% ऑफ ओवर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज। तो आप देख सकते हैं हर एक एग्जाम एस्पिरेंट के लिए हमारे पास ये कोर्स प्रोवाइडेड है, और आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप इस डिस्काउंट ऑफर को अवेल कर सकते हैं, ठीक है? सो गाइज, अगर आप एक RBI आप रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट है, तो यू कैन यूज द कोड 1x74, just use the code 1x74 and you will be able to avail flat 74% off on this course. Similarly, अगर आपके कुछ बैंकिंग फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी बैंक के अंदर काम करते हैं, राइट? सो जैब 2025 अगर वो जैब का पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए हम फ्लैट 80% ऑफ दे रहे हैं विद द कोड 1x80. सो गाइज, रिमेनिंग यू कैन जस्ट सी हियर ऑन द स्क्रीन. सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर एबल टू मेक श्योर कि आप हर एक चीज को अच्छे से देखिए. एंड अगर आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास नहीं है कोर्स, यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू योर फ्रेंड्स इफ यू आर बेसिकली लाइकिंग द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, राइट? सो बेसिकली जो जिन लोगों को सच में रिक्वायरमेंट है, जेन्युइनली जरूरत है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की, this is for all the people. Okay, so guys, that's all from the today's session, and I can see in the chat box that so many people are saying thanks. So thank you guys for basically attending the session. It's your presence which makes this session really great and successful, and it is really great that all of you are basically staying in this particular session for since this long time. And that's hats off to all of you that for past 3 years you are basically here, and today we are done with the GA ESI finance of the current app document of June 2025. I believe आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी हुई होगी. अब एक छोटा सा फेवर मुझे आप सभी से चाहिए. आपको क्या करना है, अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? सो स्कोर बताना आपके लिए मैंडेटरी है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? बाकी आप कुछ बताइए ना बताइए अबाउट द सेशन, बट स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों अपना कि क्या रहा आपका स्कोर इस सेशन से in your comment section, right? So that's all from the today's session guys, and thank you again for joining the session. Still अगर आप में से किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, you can share your queries at in the comment section. किसी को mentorship guidance चाहिए, आप इस email ID पर हमें शेयर कर सकते हैं अपना कंसर्न, और आप टीम को कॉल भी कर सकते हैं at 8146207241. Okay, so guys, now it's a good time to conclude the session. Now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.